for a very kind introduction. So, my exposure to service law began with a case where we got relief to an clerk who was being denied his benefits from backdate despite being promoted. So his pay fixation was not being done despite the promotion order being passed. So it is a consequential order. Once the promotion is done, the pay fixation also has to follow. If the option has exercised within 1 month of statutory timeline, the institution is bound to do pay fixation and issue the order from the date of the promotion. So from that point, my service law exposure began, and service law and education law. See, there are two remedies. Let's can we go to the first slide? एक मिनट सहर्ष, सुखपाल जी ज्वाइन करते हैं ना तो जरा बात कराना मुझे. First page. Saharsh, give me one Screen is minute. visible to everyone. Yeah, I think Sukhpal ji is joining. आप bilingual भी हो सकते हैं सर प्लीज. Okay. सहर्ष एक चीज मुझे बात करनी थी. खाना लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सुखपाल जी देखना. सुखपाल जी आप अपना ऑडियो वीडियो एक बार ऑन करेंगे. वीडियो ऑन करेंगे. नहीं कुछ नहीं. सुखपाल जी हाँ चलो ठीक है. कंटिन्यू. वीडियो ऑन करो. सुखपाल जी हैं. सुखपाल जी कैन यू हियर मी. हेलो. सुखपाल जी कैन यू हियर मी. हाँ जी. सुखपाल जी आपका ना एक भी असाइनमेंट अपलोडेड नहीं है तो हम लोग आपका सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे. मैडम मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैडम. नहीं आपने एक भी डेली असाइनमेंट सबमिट नहीं किया सुखपाल जी. मैं अभी आ रहा हूँ मैडम, आके बात करता हूँ. मैं मेट्रो में 10 मिनट पहुंच रहा हूँ मैं. ठीक है चलो. हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ. Whenever we are agreed with any decision of the government, for example, government of order pass किया, आप agree with it. So what is the general remedy? The general remedy lies with the civil court. High court per se is not a court where you can go for the first time. High court, by the name of it, is the highest court of a state. So accordingly, it has only appellate powers or supervisory power. Now, coming to a very interesting point, how high courts came to existence in India. So it was, of course, the latest patent from the Crown of England that the high courts came into existence of India. The later patent granted certain prerogative writs. Now, very interesting point, what is prerogative writ? I'll come to that point later. But that latest patent granted prerogative writs power on the High Court. Can we move to the first slide? Okay, this one. So the general remedy before any court, general remedy is a civil suit before the trial court. Now, when the latest patent granted upon High Court certain powers of writ, then the High Court started exercising original jurisdiction on extraordinary sites. Ordinary jurisdiction is of course property disputes, IPR disputes, maybe title disputes, contract disputes. These are the general cases of civil law. However, when the writ jurisdiction was conferred, the writ jurisdiction was not conferred. The writ jurisdiction was not conferred to be exercised against an individual. मान लीजिए आप मुझसे aggrieved है, so your remedy is not before the High Court. You have to go before the trial. You have to basically file a civil suit, follow the process as given by the Code of Civil Procedure 1908, and then you consequently get the relief or as the court deems fit orders. Now, for writ jurisdiction, there must be a government power exercise.
For example, if the government decides that we want to demolish this building where your shop is currently operating from, now you can go to High Court, you can go to Civil Court. You have both remedies. Now, why do we prefer High Court? Because of the prerogative writs. Prerogative writs are the command of the sovereign. So earlier, prerogatives were issued by the Crown of England to the officers or the officers to subordinate officers to execute certain jobs. Now, as the law progressed, especially in the modern democracy, the prerogative writs are no longer issued by the President of India. President has no power to issue any kind of writ. Now, all the power of writ jurisdiction has shifted to the constitutional courts. High Court and Supreme Court alone can issue prerogative writs, no tribunal. Though a very interesting point, Central Administrative Tribunal (CAT), it also deals with the service matters of the union government employees. It also cannot issue writs, though it has powers similar to the power of a writ court. However, it does not have the power to declare a law unconstitutional. Sorry there. Just as you informed, first we have to go to the civil court instead of moving to the high court. But suppose some case is going on in the civil court for so many years. Yes, sir. For one pretext or another pretext, no decision I am getting, no relief I am getting. So in that case, is there any option to move to the higher court? Yes, sir. Such a prolonged period hai, why case is still at the evidence level only? Correct, sir. A very interesting question raised by sir. I would take you back again to pre-independence era to answer this question. Let us go when the High Court of Calcutta, Madras, and Bombay were established. There was one interesting writ which the Constitution of India does not find reference of currently. Writ of Procedendo. Procedendo means when a superior court commands an inferior court to proceed with the trial and give a judgment. Basically, a higher court compels the trial court that you pass a judgment. Now, over the years, that which does not find a mention in the Constitution. So the term which has evolved is remand. The High Court remands back the case to trial court. Now, there are two kinds of situations might arise in that situation. The first, that the High Court, opposite party moved to High Court and got a stay on the trial. And High Court, then you have to request the High Court to remand back the case to trial court. Or you have to request the High Court to use a writ power to dismiss their case and direct the trial court to proceed to judgment. The other thing which is more prevalent in our country is that a trial court is sitting on the judgments. Evidence is going on for 10 years, final arguments 5 years. If I am doing one case myself, where the final arguments are fixed from 2017. Evidence is done, both sides, miscellaneous arguments complete. Judgment has been fixed from 2017. I got the case last year only. We got some applications dismissed, and what happened was that when the judge was about to hear the final arguments, he was promoted. He was a senior civil judge. He was promoted as an additional district judge. Now, once a judge is promoted, the court goes vacant. Now, the court goes vacant. The court master or the reader, that is basically the manager of the court, he gives the dates. I mean, you go and you take the date. Now, in those situations, we have a right to move to High Court under Article 227. Now, what is 227? 227 is also a writ power of the High Court, but that power is exercised on the trial courts, not on government officers. Government officers पे power exercise करने का correct remedy is 226. I'll come to that later. I'll explain how 226 is to be exercised and what are the ambits under which 226 is to be exercised. Now, once you move an High Court under Article 227 petition, you can request the High Court that the trial court be directed to dispose of the matter within 6 months, or at least time bound the matter. That okay, the matter is at the final argument stage, you do it within 1 year. The matter is at the defendant evidence, you complete defendant evidence within 2 years, no unnecessary adjournments to be given, and pass the order within the set time. And in those cases, High Court at times can tie a judge with the matter. Okay, even if you go to another court, you take the matter with you. Though that happens rarely, but that also is a power which High Court can, in its discretion, exercise. So High Court has much more power than Supreme Court. That is one of the very interesting things, especially in the supervisory jurisdiction. Supreme Court cannot order trial courts or administrative side, but High Court can order trial courts or administrative side as well. The Chief Justice can summon any judge in the Delhi, Chief Justice of Delhi High Court can summon any judge of any court in Delhi. That you come and you be present before you come to my chamber and stand before me, and then you may have to answer whatever his lordship may ask.
So that is one thing. So that is to answer the third question. That there is a remedy in Article 227. So now coming to it, now of course nobody wants to go to civil suit for service matters. Now you want promotion, you cannot wait next 5, 6, 7 years to get promotion, and then of course there will be appeal, there will be second appeal, there will be SLP to Supreme Court. So that is a long period of time, and to be very honest, the government can afford. Individuals cannot afford. Governments can afford to file one appeal, second appeal, and SLP. However, the individuals do have a financial constraint. Legal services as it is are not very affordable in India. Of course, there are I'll say a range of councils who you can engage, and every council has the prerogative to decide their own fees. But generally, legal services are not cheap. So any of you unfortunately had the pleasure of facing that legal trouble, you might know it. Now, at that point, writ jurisdictions come into picture. Writ jurisdiction is actually a remedy of High Court where you can challenge any order of the government, including a promotion order, a pay fixation order. Order of Vice Chancellor can also be challenged. VC is also part of the government. Now, how is VC a part of the government? VC is not Home Secretary. That question must arise. VC is the head of an institution, basically an educational institution. He does not have the power to demolish a house. He does not have a power to construct a building outside the perimeter of the university. So how does the vice chancellor come into the picture? How does the registrar come into the picture? They come into the picture through the word instrumentalities. They are the instrumentalities of the government. The university is funded by the government. University's land is the government's land. University employee salary comes from the central treasury. Students' education is largely funded by the government of India, especially in the university. A very, very small portion of the expenses incurred by the university goes from the student's pocket. That too from basic maintenance and other things. And colleges level, of course, it's higher. At university level, it's much lower. So that is why the VC is an instrumentality of the government. So that is how they. I know a very interesting question might arise. Okay, so for example, you're working in the university very well. You are covered under writ jurisdiction. Now, a very interesting question. If you are working in, let us assume, MIT University, would you be covered? Any thoughts? Okay, let us assume a student. Justice may be available to anyone. Point. Good points. As per Constitution of India, everyone has a fundamental right to. Whenever we enter into root service, and it is done by some sort of agreement between the employee and an employer. And within the ambit of that, if I have been deprived of my rights and the privileges which has been mentioned in the institutional framework or the constitution, then I can move to the court of law. Correct, sir. You can move to trial court. However, you cannot go to High Court because your grievance is not against the government of India. A very interesting judgment came few years back. Dr. Janet Paul versus Union of India versus SRM University. So SRM University is a private university. Now, how can you sue a private university under writ jurisdiction? It is not the instrumentality of the state. It is not the government. Then how come it will come into the picture? It will come into the picture through that judgment. Now, what that judgment says very beautifully outlines. You discharge a public duty of education. It is not a business. You discharge a sovereign function of the state in dispensing education. So, and you are having government benefits. You are having UGC rules are applicable on you. So, in certain cases, High Court still can entertain writ against private institutions as well. Especially students can of course go. Now, faculty can go, cannot go. Administrative staff, especially non-teaching staff, they can go or cannot go. Still a question of law. Of course, it is arguable, very strongly arguable that it is maintainable because of Dr. Jayapal judgment. But it's still very interesting point कि ऐसा हो चुका है कि High Court has itself Supreme Court judgment दिया कि High Court can step out of the boundary. So that boundary which once existed, कि private institutions, MIT, Sharda, they are completely outside the ambit of the High Court's jurisdiction. So that has been, I would say, slightly weakened. It no longer is as strong as it was back in the day. A very interesting point. How many of you are aware about South Asian University? We heard the name. So South Asian University is not the government of India project. South Asian University was formed
in an agreement between ASEAN nations. So as a result, they do not have the government of privileges. Someone has some question from the online participant. Online participant, you want to have any query or questions? Salilji? Yes, sir. You want to ask something from the sir? No, not now, sir. After your session. Sir, you may continue. So now South Asian University, a very interesting point. It is not a part of the government. It is not completely funded by the Union of India. Now, what is to be done in such cases? A very interesting thing. They also have the immunity under the UN Act. So actually, their claim, the South Asian University faculty members, they have the blue number plate cards. They have the diplomatic immunity. So police cannot simply come and arrest them. They have certain privileges. Their salaries is not taxable because of the privileges granted to them in the act and in the government of India notification and the agreement between ASEAN nations. So as a result, South Asian University is wholly declining that the High Court cannot exercise any kind of power over us. So High Court is completely powerless. That is their argument. For example, Delhi University, if I am suspended, I can go to High Court. I am a student, VC finds me guilty of misconduct, proctor finds me, they may rustigate me from the university, maybe for 2 semesters, 3 semesters, depending upon the statute applicable. They may also reprimand me. I have a remedy before High Court. I can simply go to the High Court and say natural justice has not been followed. The procedure established by not been, the statute has been violated. The VC has overreached his powers. The proctor has failed to be neutral. The complainant has not been cross-examined by me. You did not provide me fair opportunity. Now, where will the South Asian University go? That is a question of law which is currently pending before the High Court. The judgment is reserved. So whenever the judgment would come, if the High Court holds that okay, SAU is amenable to our jurisdiction, that is going to be a landmark law in India. Currently, no international institution has been held to be amenable to High Court's jurisdiction in India. They all claim the immunity under the UN Act. So that will be a very interesting development on the writ jurisdiction part, especially with respect to universities. Because if SAU is held to be amenable to writ jurisdiction, then the argument that private universities are are outside the ambit would feel very weak. So that is very interesting point and thing to follow as of now. So the judgment is reserved. I will share when the judgment comes, and we are hoping that the judgment would come in the favor. Is there any clause regarding that all the arguments has been made, Yes, sir. all the parties has been heard, and judgment has been kept reserved? Yes, sir. Is there any limit after how much time it will be So, delivered? so Supreme Court generally says that we should not reserve a judgment for longer than 6 months. But High Court has certain kind of discretion because of being a constitutional court. So the judgment has been reserved in October. It has been around 3 months now. So we were hoping that the judgment would come by now. We are actively waiting for it. Faculty members have been suspended. It can be kept reserved for 1 year, 2 years, 3 years. No, not that long. You can move to Supreme Court under Article 136 of the SLP, special leave to appeal, Supreme Court, and then you can. Because to the best of my knowledge, in one of the case, it is happening ki bhai, just you give the example ki bhai that has been transferred, another joined, then vacation came, for one pretext or another pretext, judgment has not been pronounced for the last 2-3 years. So in that case, two things might arise. If the judge retires and a new judge comes into the, because a judge cannot pass a judgment after he is retired. So once he is retired, the other judge would be assigned the case and he will have to rehear the matter From the beginning. from the stage of final arguments. Pleadings are complete, but if the judge retires, then he can no longer give the judgment. So the advisable thing to do is, if the judge is about to retire, move to Supreme Court under Article 136 and brave to Supreme Court under SLP that direct High Court to dispose it to pronounce the judgment within 2 months, 3 months, whatever reasonable time the petitioner might pray and Supreme Court might give. There is a remedy to that effect. But general tendency is there to reserve judgments for some time. There is also a cap, and I think it is not covered under it. Yeah, yes, sir. So if any decision has been pronounced by the CAT, it can be challenged in the High Court, or the decision of the CAT will be final in the service letter.
Sir, the decision of CAT itself is not a pronouncement of a constitutional court. So CAT, of course, they are a tribunal established by the constitution, but they are not exactly a constitutional court. So once CAT pronounces a judgment, in my humble opinion, university can of course challenge it, and university can also challenge it on the ground that if a remedy is sought from us, that the appropriate place is the High Court. There can be a good argument to this effect. Because CAT is for the administrative bodies. University is not an administrative body. And to go to CAT, the EC has to pass a resolution. But I think the number of educational institutions has been made part of the. Correct, yes, sir. But the main relief might have been sought from the union. State administration also, Delhi government is also. Yeah. So, for example, sir, let us assume that your some, for example, let us assume that you worked earlier in the ministry, or Ministry of Home Affairs, and then after 10 years of service, you applied through proper channel to the post of AR or JR in the university. You got selected and you entered the service. Now, let us assuming that you are covered under the GPF scheme or the CPF scheme, the old pension scheme to say. Then your certain benefits are to be transferred from the previous. To the present. Let us assume that the Home Ministry does not transfer it, and High Court also, and the university says we cannot do anything, they have not transferred it. Now, at this point, you can have two remedies. You can go to CAT against the union that they have not released your amount to the university, so your pensionary benefits, other benefits are not being released by the university. At the same time, you have a right to move to High Court. Personally, I always suggest clients to go to High Court. You get a good hearing, you get a patient hearing, and High Court being a constitutional court, its hands are not tied by any statute. CAT cannot go outside the purview of Administrative Tribunals Act. But High Court, it has a constitutional power. So it can give you relief as it deems necessary. Further interesting point, CAT, there is 1 year of limitation. For example, let us assume that your promotion has been denied. Or let us assume a DPC was to be conducted yesterday. It has not been conducted. Consequently, you challenge it, let's say in December next year. It would still be maintainable, but you challenge in January, it would not be maintainable, because in CAT there is a limitation of 1 year. You have to approach within 1 year, but in High Court there is no such limitation. You can wait for 20 years, and if you are able to show High Court that yes, I had a reasonable cause for not approaching this court for 20 years, then the High Court may interfere. High Court, of course, 20 years is a very long delay to condone. However, High Court has the power. There is no limitation per se applicable on High Court. But generally what happens is ki when people are looking at different remedies, they generally prefer High Court. Even the general cases, I have gone through the several statement of the High Court judges ki bhai, most of the cases it has been, notice ki bhai ki limitation clause has been invoked. So it should not be the sole criteria to deny the justice. Correct. Generally, the law states that after 3 years you cannot come to the court. But limitation is not very strictly applicable on writ. Writ is a lot of discretion. Again, I told you that prerogative power of the crown has flowed to the High Court. So that because of the prerogative power, the government cannot tie the hands of High Court. The day that thing happens, your constitution will have to be amended substantially if the hands of the High Court are to be tied. Because High Court has very wide jurisdiction. I would say the most powerful court in India is the High Court. Even Supreme Court cannot pass orders like High Court. Supreme Court has very limited jurisdiction. Of course, on appellate side it can, but on original side you cannot go and approach Supreme Court to pass this order. However, on High Court you can, and High Court can pass any order as it deems fit. There are no restrictions. As I said, आज की डेट में writ क्या है? At that time it was a sovereign command which flows from the offices of the crown to other people, or from the crown to other people. Letters patent. You might have heard about letters patent. Letters patent are a type of writ. So basically, currently, it is a written order bearing nature of a sovereign command, directing a public authority to act as per the command contained therein. इसका मतलब ये है कि it is not an executive order. It is not simply a judicial order. Judicial order comes from the trial court or High Court or appellate side. But a writ, when High Court grants you a writ, it is a command of a sovereign nature. So even, for example, let us assume that
I think you are aware about Parliament has a lot of power in India on finance and other things. They can frame laws, they can take your benefits retrospectively away, they can give you retrospectively benefits. Now let us assume that the High Court has granted maybe 100 crores cost in your favor. Your whole family was incarcerated for 25 years. High Court finding it extraordinary. High Court imposed 100 crores cost. You appeal to the division bench in LPA. Cost is reduced to 50,000. Sorry, 500 crores. Sorry, 50 crores. And then you move to Supreme Court, cost is reduced even to 20 crores. Now the government does not want to pay 20 crores. Can it do anything? A genuine question from all of you. If the Supreme Court passes the order, the government will have to make the payment. Because it is a sovereign command. Once the Supreme Court orders anything, it becomes a sovereign command. Parliament cannot sit over a sovereign command of the court. That is why Parliament cannot overrule a Supreme Court decision. You might have heard that the Parliament brings a new law to undo what Supreme Court did, but that is the incorrect way of reporting. Basically, Parliament can only remove the fault which the court pointed out in its judgment. Unless that is done, for example, let us assume that court strike down a law which says A, B, C, D. सर ये जो नोट आया ना फर्स्ट जनवरी वाला सर इसमें कुछ बंदो नंबर मेंशन नहीं है सर कुछ आया Sandeep ji, unmute your speaker. चलो चलो Sorry, mute. So they have to actually correct their the Parliament cannot sit in appeal over a Supreme Court judgment. So when Supreme Court says that oh, you are liable to pay 100 crores, they have to pay. The Parliament cannot sit and pass a law that no, we are no longer liable to pay 100 crores. Same way, let us assume a law was passed stating A, B, C, D. Parliament, Supreme Court held it to be unconstitutional. The Parliament passed same law again, but it wrote D1, and Supreme Court held that D was unconstitutional. This is remedying what the Supreme Court pointed out. Now, if this is correct, now if the Parliament passes A, B, C, D again, that is unconstitutional law. Parliament has acted beyond its jurisdiction. It cannot sit over an appeal over Supreme Court decision. Same way, if High Court says something and it has not been challenged in Supreme Court, because the High Court is a constitutional court, the law becomes mandatorily applicable on everyone within the boundaries of that state. But the system that is prevailing in India, and it has widely been recognized in some cases, the courts are taking over the power of the executive, and executive are also eager to take the power of the courts. Even in case of the appointments of judges, they themselves are deciding their own service conditions. And how a judge will be appointed and how they will be recommended. I will take you to some historical points on this thing, sir. Very interesting point. I would not say anything against or in favor of collegium. Really very surprising कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट सेलेक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंपटीशन होगा इवन की पार्लियामेंटर जो है उनका अगर इलेक्शन होगा तो ओवर इंडिया लेवल बेसिस होगा पीपल विल डिसाइड लेकिन उनके केस में दे देमसेल्फ विल डिसाइड I'll tell you the reason, sir. So let's go back to a few years back. Before emergency was imposed, there was a judgment which came. That judgment laid down the law. It was case of Nanda Bharati versus state of Kerala. That judgment laid down the law that Parliament cannot amend the constitution. It laid down the basic structure of the constitution. That Parliament cannot do anything to alter the basic structure. They can of course amend it, but they cannot tomorrow say that no, equality before the law is nothing in India. This person will be superior, this person will be inferior. So this is a destruction of basic structure. They cannot do that. So that judgment came. In that judgment, 13 judges were sitting. The judgment flew through the majority of 7:6. A very, very thin majority assured the constitution which exists today. Had that been not done at that point of time, constitution has been amended by the then prime minister led government. उसके बाद इमरजेंसी आती है. इमरजेंसी में भी जजमेंट आता है एडीएम जबलपुर. एडीएम जबलपुर में बोलते हैं कि you don't have a right to come to Supreme Court when emergency is imposed. I'm telling you in very brief. That judgment is very, very nuanced, and उसको मैं explain करने जाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे. I'm telling you in very brief. In emergency, you don't have a right to approach Supreme.
for enforcement of your fundamental rights. That means your fundamental rights wholly and solely are suspended. No right to life, no right to liberty. You are arrested, the Prime Minister deems it fit that you be incarcerated for 900 days and not be presented before the court, you will be incarcerated for 900 days. There is no writ of habeas corpus. So, Apart from that, Impress Act has been enacted. sorry, sir. And there, even apart from the emergency, numerous act has been enacted, where the people has been kept without giving the opportunity for hearing for 6 months, 9 months, तो वो तो continuously चल रहा है. But sir, they लेकिन are presented before the where magistrate. service condition is concerned, so it is not going to violate the constitutional. That's what I'm saying, sir. कि आप जैसे collegium वाले point पे बता रहा हूँ मैं. So that time when the Kesavananda Bharati judgment came, 3 judges of the Supreme Court were superseded for the position of Chief Justice of India. So Chief Justice of India is not so superior judge of Supreme Court. He's basically first amongst the equals. But of course, the position carries great honor. So 3 judges, I will not name any judge, but 3 judges were superseded by a junior judge to become the Chief Justice of India. And that was a direct result of writing a majority opinion in Kesavananda Bharati, restricting the power of parliament, restricting the constituent power of parliament. In ADM Jabalpur, I will name the judge, Justice Hansraj Khanna, HR Khanna. So Justice HR Khanna wrote a judgment. It was a minority judgment. He wrote that no, you have a right to approach this court. You have a right to approach the court for enforcement of your rights even during emergency. He was superseded. So consequently, any judge who dared to wrote a judgment protecting your rights was superseded to become the Chief Justice of India. So if this kind of supersession keeps on happening, it will actively demoralize meritorious people from joining the bench. So because I'll tell you why many people do not want to join the bench. As a lawyer, you might be earning maybe 3-4 lakhs a day. I'm talking about the average successful lawyer. If you will go by the chronology of the cases, you will say in sometimes Supreme Court makes the judgment and Parliament revert it. In some cases they accept it. In some cases they say no, it cannot happen. It will go like that. So again, I they have to, think कि मतलब even the judiciary में मैंने what I have observed being an individual or the Indian nationals कि बहुत ज्यादा contradictions हैं और वो जो एक बात कहते हैं कि show me the face I will show you the rule तो वही चल रहा है. Feeling तो चाहिए ना legislative election. so if the again, if I talk about NJC, National Judicial Appointment Commission, its constitution was such that executive could have stopped any appointment. Now, personally, I am not in favor or against the collegium system. However, I feel that executives should have least amount of say in the appointment of a Supreme Court and High Court judges. The reason is state is the biggest legislature. You should not think about the nepotism or other things coming to the bench, because when your right would be under threat, it is those judges who will protect you. For example, a DM passes an order demolishing your house. Do you have any remedy? You can only approach the High Court. And if judges sitting in the High Court are so obliged to the government for their post, they would not, genuine thing, it will not happen. In very rare cases, it will happen. So collegium system was designed to secure the judiciary's independence, to secure the judiciary's power and ability to deliver justice. Because if you start appointing them like secretary to the government of India is appointing through UPSC examination, a judge is also appointed through UPSC examination. So that kind of system will flow. An advocate who has practiced for 20 years and has a good practice, he starts to getting know the law. He starts getting to understand the law to a great extent. So those are the people who you want as judges. So people that is taken by my own consciousness कि हाँ ये 20 साल से है, ठीक है. I will tell you a simple example. yes, sir. है कि मेरा एक केस था, सिंपल सा केस था. I went to the Rohini court. One advocate was there. He asked me कि आपको 5,000 रुपए लगेंगे. मैंने कहा मैं 100 रुपए दूंगा आपको इस केस के. करते करते 500 रुपए में बात फिक्स हुई. And when the judge pronounced the order, मैंने कहा इसमें क्या लिखा है वो मुझे बता नहीं पाया कि जज ने क्या लिखा है. और कितने सालों तक और जिस हिसाब से होता है मुझे लग रहा था कि 5-7 साल से तो काम कर ही रहे होंगे. Let's restrict ourselves to the topic. ठीक है, जो subject है उस पे discussion. ठीक.
So basically that is a writ command. आज की डेट में writs can only be issued by the constitutional courts. DM, SDM, secretary, under secretary, they no longer have the power to issue any kind of order in the nature of a writ. They can only pass statutory orders as contained in the statute or in the relevant government rules. So now coming to the point, कि power high court रूल पर ultimately आती कैसे है? Supreme Court purely comes from Article 32 to pass writ. High Court 226 to 27. Now, interesting thing, High Courts also draw their power from their respective letters patent issued by the Crown. So if you will find in on practical side that still High Courts quote that under letters patent we have this power. Under letters patent we have the power of doctrines of parents patri. That means father of all. So court can actually, for example, if you think some time ago in Uttarakhand or Himachal, something happened that High Court took a cognizance of cows in the area and animals were not being taken care of and invoked the doctrine of parents patri. We are the parent of all, High Court. So we will take care of it. And they passed the orders against the government. Same way in Maharashtra, Bombay High Court, in a judgment, in a very interesting judgment, invoked the parents patri doctrine to give the custody of the child to grandparents, depriving both parents of the custody, and hold that you both are not fit to have the child's custody, and the custody was granted to grandparents. And at that point, it went outside the ambit of the statutory power and entered the powers of letters patent and constitutional power. Invoked the doctrine of parents patri, parent of all, and granted the custody to the grandparents. So High Court, इसीलिए मैं कह रहा हूँ High Court की power बहुत wide है. Supreme Court cannot go into all that things. Supreme Court can only issue writ for enforcement of fundamental rights. Service matters are per se not fundamental rights. They are constitutional rights. Because your Article 309 में President of India और pass करता है recruitment rules ये सब. So they are more of a constitutional right instead of saying purely a fundamental right. So High Court has the jurisdiction for service matters. Supreme Court can, of course, in its discretion, state that we think that Article 12 or 14 is being violated by the service condition, and we are taking cognizance. But on a more practical side, Supreme Court sends you back to the High Court. Okay, you go to High Court. Let us have the benefit of High Court's wisdom, how High Courts have decided. 226 gives the power to issue writ against any individual. 227 only against the judiciary, that is trial courts. So that is how Tees Hazari, Patiala, Saket are controlled by Delhi High Court. If Article 227 is removed, the subordinate courts will cease to be subordinate courts. They would not be controlled administratively and administratively by the High Court. Because of Article 226 only, High Courts can pass administrative directions. Because that is how every trial court is supposed to be under the constitution. They are not expected to be independent, completely independent courts. They decide their own procedure, their own rules, everything on their own. No, it has to necessarily flow from High Court. For example, district judge tomorrow passes an order that nobody is going to file this particular civil suit in this particular manner. The advocates can challenge it before the High Court. That High Court rule states that we can file it, and district judge has passed a direction contrary to it. So High Court frames actually rules for its own cases and for the subordinate courts cases. So that is how Article 2 and sir आपकी जो question था वो वाला कि case judgment pass नहीं हो रहा कई सालों से. Article 227 की power. The Supreme Court, High Court can direct the trial court that okay, you pass the order within 6 months. That is in High Court itself. It's High Court. So The case is pending in High Court itself. High Court itself. At that stage, sir, I would not advise you to move Article 227. It would be heard by the brother and sister judges. And that would again, one thing would the High Court's counsel will contest that you cannot issue a direction to this court. But on legal point, you can move under in that case, I would suggest you to move under Article 226 as well. You make XYZ versus High Court of Delhi. If you want to relief against a High Court, for example, a case is going on between A and B. You file a writ under Article 226, read with 227, and you pray for that relief. A versus B, direct the learned single judge of the Honorable High Court to dispose of the matter within 6 months. Though on practical side, they will not do it.
in other cases, you said कि भाई की जो procedural part है, Yes, sir. that must be followed. In civil Suppose कि suits. किसी के against inquiry committee वगैरह है, Correct, correct. जो भी उसके against charges थे, that has been established and he has been punished. But one or two procedural parts has been left in between. So can he seek the relief from the court? Now, sir, the court will have to examine whether principles of natural justice have been now. अब इसमें आपके दो चीज हो सकती है. For example, that procedure was a statutory procedure mandated by the statute of the university. Then it has to be followed. अगर मान लीजिए वो कहता है कि भाई this DR has to necessarily hear this matter. Then a DR has to hear it. JR cannot do it or AR cannot do it. या मान लीजिए कहता है कि registrar himself has to pass an order to this effect. Then only the registrar can do that. मान लीजिए प्रोसीजर में आपने किया, JR ने कर दिया, registrar ने अप्रूव कर दिया उसको. अगर ये लिखा आ गया उसके अंदर, then a point will can come to high court कि भी ऐसा हुआ है. Apply. जैसे एक केस मैं कर रहा हूँ आज की डेट में. So Proctor has passed the order and VC has assented to it. Whereas the statute of GNU That states. person will be exonerated or the inquiry will be initiated afresh. नहीं सर, ऐसे केसेस में जनरली फ्रेश इंक्वायरी कनेक्ट कर देता है कोर्ट. एक्सोनरेशन तब होगा जब मान लीजिए वो इंक्वायरी 20 साल से चला रहे हैं, उसको आप सब्सिस्टेंस अलाउंस पे रोक के बैठे हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट इक्विटी के बेस पर उसको कह देगा नहीं आप नहीं कर सकते. एंड वी आर. और जनरली क्या होता है, मान लीजिए इंक्वायरी बैठी, मिसकंडक्ट पता चला, आप लोगों ने उसे सस्पेंड कर दिया 6 मंथ्स के लिए एम्प्लॉय को. हाई कोर्ट कह सकता है कि भाई उसने सिर्फ पेन उठाया था ड्रॉर से, तो पेन उठाने के लिए 6 महीने का सस्पेंशन इज डिसप्रोपोर्शनेट. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे वो से रिप्रिमांड करके छोड़ देगा. बट ऑफ कोर्स आप लोग भी पेन उठाने पे तो नहीं करोगे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी. आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल टू The अंडरस्टैंड. gravity is also examined. It's very important. For example, you go and you घेराव the office of registrar. That is a misconduct, and that can have serious consequences. Even the court might not want to interfere they will interfere very carefully in that point. Even in JNU, few years back घेराव काफी हो गए थे common. So हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है JNU में, उसके कुछ मीटर्स के दायरे में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ना कोई घेराव हो सकता है. Today's newspaper also is. JNU है सर. नहीं डीयू में भी है ये ऑर्डर. DU में भी. डीयू के लिए भी ऑर्डर है, इसीलिए जितने भी धरने होते हैं गेट के बाहर होते हैं. So they still did it. JNU filed contempt petition in High Court. High Court found them guilty of contempt. Currently the matter is pending in appeal. तो और उसमें एक पॉइंट ये आया था कि वो ऑर्डर पास किया है फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रार को पकड़ लेंगे, AR, JR, रेक्टर सबको अपने घेराव में कर लिया. So that is something which is high, which is misconduct of grave nature. You cannot basically stop the functioning of the university for your own benefits. Of course, you have a right to be heard, and if the VC is not hearing to you, you have a right to move to the court. जिस JNU हॉस्टल की फीस बढ़ी थी, तो JNU went on to parliament, protest किया, वो रुक गई फिर वो. So that is how the High Court's power is. Article 32 मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की पावर कम होती है ना. कम क्यों होती है? अब सी सुप्रीम कोर्ट we can only go to Supreme Court for the rights conferred by this part. This part means part 3 of the Constitution, which deals with the fundamental right. I wanted to ask this question कि आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? So part fundamental right, and Article 32 is itself a fundamental right. जैसे आपका आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ है, वैसे ही आपका फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट जाना. और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, और किसी पार्ट के लिए नहीं. अब मान लीजिए यू आर एग्रीव्ड कि भाई आपकी सर्विस कंडीशन में चेंज लाया गया, सही नहीं है, सो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं योर फंडामेंटल राइट्स प्राइमा फेसी इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस, यू गो टू हाई कोर्ट. दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल, दे हैव पावर टू एंटरटेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. we do not have power to entertain anything except fundamental rights. अब इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के रिट्स इशू कर सकता है? habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. Prosedendo is missing. मैंने आपको बताया था प्रोसीडेंडो हुआ करती थी पहले एक रिट. तो प्रोसीडेंडो जो है वो सीपीसी में इंक्लूड हो गई रिमांड एक्सेट्रा की फॉर्मेट में. बट स्टिल आप ये चीज देखेंगे ना, इशू रिट, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट्स, दैट इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इसका मतलब होता है कि इट इज एन एग्जाम्पल,
Means the High Court cannot issue these kind of writs, They can also issue same name. same name, sir. But including going by the principle of statutory and constitutional interpretation, including जहाँ word use हो गया, that is a non-exhaustive list. So Supreme Court can still read proceedendo into this. That is why I used the example of proceedendo at the beginning, because it would help you understand कि Article 32 में लिखा नहीं है proceedendo, but High Court still has the power to direct So trial. how many writs are there? Because you are mentioning only 5 writs. five main. So how many type of writs are there? Sir, generally, Is there any list of writs? sir, originally, तो आप ये अगर if you go historically, Crown can issue any direction. ठीक है, Crown is the king, तो कोई लिमिट नहीं होती थी. As you went on time, 6 major writs came into being. This one plus proceedendo. लेकिन आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किस तरीके से, ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया गया है. सुप्रीम कोर्ट इज फ्री टू क्रिएट ओन रिट्स. मान लीजिए कोई रिट ऑर्डर इशू करना है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड यू. फॉर एग्जांपल, आपका मान लीजिए प्रमोशन होना है, आप में से किसी का, रजिस्ट्रार साहब नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन कमांड प्रमोट करो. मैंडेमस. हेबियस कॉर्पस, आप में से किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और गायब पड़े हो आप 4-5 दिन से, मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट हो रहे हो ना कुछ, यू हैव अ राइट ऑफ हेबियस. हेबियस कॉर्पस मतलब होता है कि प्रेजेंट द बॉडी, बॉडी को प्रेजेंट करो, यानी आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा. When someone is arrested यस सर. and kept hiding, Yes, how sir. he will approach the court? So he will not approach the court. Next friend will approach the court. For example, his wife, his son, his friends. And if nobody is there, nobody can. Let us hope that condition does not come for anyone. There will be case. So friends, colleagues. neighbor कोई तो बताइए. हाँ, anybody has a right. Habeas corpus में there is no such as thing कि आपका सिर्फ आपकी बहन ही आ सकती है, कोई भी आ सकता है. कि भाई आप मिल ही नहीं रहे, आप रोज ऑफिस आते हैं, सर आज आ ही नहीं रहे मुझे 2 महीने से, घर पे फोन कर रहे हैं, घर पे भी नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा, तो डायरेक्ट द पुलिस टू प्रेजेंट द बॉडी. और किस एक्ट में नहीं लागू होता है? मींस कई एक्ट ऐसे हैं ना. नहीं सर, हेबियस कॉर्पस हमेशा एप्लीकेबल है. हेबियस कॉर्पस इज द ओनली क्रिमिनल रिट. ये सब सिविल रिट्स है बाकी सारी. हेबियस कॉर्पस इज अ क्रिमिनल रिट. टेररिज्म के केस में सब पे हो जाएगा सर. यू हैव टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट. आपको पुलिस गायब नहीं रख सकते, अंडरग्राउंड नहीं रख सकती आपको पुलिस. आप बॉडी कर रहे हैं, जिंदा या मुर्दा? जिंदा जिंदा. पहले से बॉडी. वो लीगल लैंग्वेज. इसलिए बॉडी बोलते हैं because the meaning of the word is body. Physically you have to be placed. कॉर्पस का मतलब बॉडी. Depends on the circumstance. रिट ऑफ जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ है ना. एक सर ये 24 आवर का है, पुलिस की कस्टडी में 24 आवर कैसे काउंट करते हैं? वो आर्टिकल 21 है सर. नहीं मैडम, वो जो 24 घंटे पुलिस हिरासत में रख सकती है, उसका कितनी काउंटिंग कैसे? आपको सर मान लीजिए आपको थाने में बिठा के अरेस्ट कर लिया, आपको बिठा के रखेंगे, शाम में छोड़ देंगे तब कुछ नहीं होगा. आपको 24 घंटे लगातार बिठा दिया थाने में, फिर प्रेजेंट नहीं करते, आप कर लीजिए हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस. दे हैव टू डू इट. वो करेंगे, वो उसके आगे नहीं करेंगे. कहीं ना कहीं किसी मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे कि सर हम आपके घर ले आए, इसको टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, तो मजिस्ट्रेट घर पे ही बुला लेता है अक्सर. दिल्ली में कम है ये चीज, दिल्ली में छोटी जगह है, बट एज यू गो इनटू उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बड़ी जगह है, तो एक जगह पे 3-4 मजिस्ट्रेट ही होंगे मैक्सिमम, उससे भी कम हो. सो मजिस्ट्रेट साहब है नहीं, कोर्ट से उठ गए हैं, 24 घंटे खत्म होने वाले हैं, सुबह नहीं ला पाए, उसको कैसे लेके जाएंगे? फोन करो. और किसी को ठीक करना होता है तो रात भर लॉकअप में रख के पीट के निकाल देते हैं. ना वो वायलेशन होता है और वो सीधा भी हो जाता है. प्रोहिबिशन का मतलब आपको रोकना किसी भी चीज के लिए. फॉर एग्जांपल कि आप सस्पेंड करने वाले किसी को, हाई कोर्ट को रोक सकता है कि भाई सस्पेंड मत करो, रुक जाओ. बेसिकली स्टे. हाँ सर, कॉमन लैंग्वेज में भी स्टे, क्योंकि सीपीसी में स्टे बन गया ये. क्यो वारंटो. फॉर एग्जांपल यू वांट टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि भाई ही डज नॉट हैव द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, यू कैन गो थ्रू क्यो वारंटो. मतलब किसकी अथॉरिटी पे अपॉइंट हुए हो, किसके वारंट पे अपॉइंट हुए हो. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड एट द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्यों वारंट में किसके वारंट पे अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट गलत है. फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि हिंदी ऑनर्स, हिंदी पीएचडी बंदे को आपने फिजिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया, क्यों वारंट हो, कैसे अपॉइंट हो गया? सर्शरारी. अब सर्शरारी इज वेरी इंटरेस्टिंगली इट हैज डेवलप्ड. अर्लियर पहले से मतलब होता था टू समन ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स.
मतलब मान लीजिए 30,000 में जो केस पेंडिंग है उसके रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिए देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अब आपको एक हल्का सा ब्रीफ आउटलुक देता हूँ मैं अमेरिका में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हर मैटर नहीं सुनती, बहुत बहुत कम सुनता है। मतलब इंडिया का कोर्ट तो बहुत वाइड है उसके मुकाबले, वो बहुत कम मैटर सुनता है। तो व्हेन दे आर विलिंग टू हियर अ मैटर दे ग्रांट रिट ऑफ सर्चुलरी, वो सर्चुलरी ग्रांट करते हैं। सर्चुलरी मींस कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स हमारे पास भेज दो, सारे पूरी केस फाइल भेज दो हमारे पास। वो जो मैंने आपसे अभी पूछा था, हाँ सर। उसके लिए कोई बहुत सारा चल रहा है जी जी सर। और वो नहीं हो रहा, इसके अंदर भी जाके हम उसको फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 227 रीड कीजिएगा सर, क्योंकि सर्चुलरी जनरली उस केसेस में होता है जब कुछ हो चुका है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। और बेसिकली अब सीपीसी में हाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू रिक्विजिशन द टीसीआर, रिक्विजिशन ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, सीपीसी क्या हो? I mean code of civil procedure, code of civil procedure. So under code of civil procedure the high court generally passes a direction that the trial court's record is requisition. The learned principal district session judge is requested to send it within a period of 1 week or 2 weeks. But certiorari भी grant हो सकती है उसके लिए। But certiorari का असली मतलब ये होता है कि you send the record to us, we want to review it कि हो क्या रहा है, ये होता है। अब ये पावर भी सिर्फ इसी राइट की, हाँ। सो ये आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाना है अभी इसी पार्ट के लिए जस्ट सुप्रीम कोर्ट भी आप, और सुप्रीम कोर्ट ये रिट्स भी इसी पार्ट के लिए इशू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में डबल लिमिटेशन है, आपके पास जाने का भी राइट नहीं है, फर्क समझिए, आपके पास जाने का भी राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास करने का भी राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं गए सुप्रीम कोर्ट अपने आप कर दिया, अरे गलत हो रहा है इसका, देख रहा हूँ बेचारा न्यूज में रोज आ रहा है मैंने कर दिया, नहीं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल या लीगल राइट्स के लिए नहीं कर सकता। नाउ अब इसमें ये है व्हिच हैज नॉट बीन जनरली एक्सरसाइज्ड, पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट कैन आल्सो गिव दीस पावर्स टू एनी अदर कोर्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट इफेक्टिवली डिफेंड इन एवरी कोर्ट, सो ये पावर नहीं जनरली पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है। ये पॉइंट देखिए, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से 360 तक पढ़ेंगे ना, 352 से 368 तक पढ़िएगा, उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी एक्सेप्ट 2 राइट्स। ये जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई थी इमरजेंसी के बाद, जो नई गवर्नमेंट आई थी वो एक अमेंडमेंट लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बेसिकली आर्टिकल 20 एंड 21 दे आर having immunity from suspension, they cannot be suspended under any circumstances. Your right to free speech, live in India, everything can be suspended, but your life, personal liberty and the protection before the magistrate, double jeopardy, they cannot be suspended. So article also the 44th amendment to the constitution brought that change. तो president ने declare किया आप सारे fundamental rights चले जाएंगे except those rights. तो basically justice खन्ना का minority judgment था as on the date that is law of the land. So the judgment which cost him the Chief Justiceship of India is currently law of the land. So ये is very interesting thing है, काफी हमें लॉ स्कूल में कोर्ट में बताया भी जाता है when we enter कि you become like Justice Khanna. At the face of adversity you write a verdict which defends the constitution. क्योंकि we will retire of course, but your judgment stays, your order stays. So yeah, that is why the fourth part is very important. अब हाई कोर्ट, दिस इज द बेस्ट रेमेडी अवेलेबल इन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इशू किसको कर सकते हैं, एनी पर्सन, वीसी को भी इशू कर सकता है, एनी अथॉरिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इशू कर सकता है, इंक्लूडिंग इन एप्लीकेबिलिटी से एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कर सकता है, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स दिस पार्ट 3 और फॉर एनी अदर पर्पस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स गवर्न होते हैं सर। ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है एनी अदर पर्पस। Supreme Court is limited till this part 3. It has to flow from part 3 only. Part 3 is Fundamental rights. सर एक ये राइट टू प्रॉपर्टी था वो आजकल लीगल राइट है, वो तो निकाल दिया। It is a Part concept. 3 से हट गया ना? Part 3 से हट गया सर। आर्टिकल 31 हुआ करता था वो स्टेटस किस टाइप का है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप में से किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लिया ना प्रोजेक्ट? आर्टिकल 300A है सर। Now your pension also comes under right of property. मतलब फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आती है तो मतलब वो भी देना ही हो सकता है।
सो इनके पास भी सेम पावर है, बट मतलब डिनाई हो सकती है इन द सेंस कि मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कल को कहे कि हम पेंशन नहीं देंगे। नहीं फेस रूल्स में नहीं, डिनाई हो सकती है इन द सेंस अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वैसे भी ये सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट तो कहीं फिर आप खुद ही जवाब दे रहे हो। नहीं, मतलब मैंने सोचा गवर्नमेंट कहते कि हम नहीं देंगे मतलब पेंशन वगैरह दे रहे थे तो चेंज तो कर ही सकती है सरकार ने बनाई कि henceforth हम लोग पेंशन से डिस्पेंस करते हैं, बट वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। जैसे ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन का भी तो रूल बनाया है ना सरकार ने। अब उसको तो विड्रॉ की थी, कि मैं कह रहा हूँ ओल्ड पेंशन को भी 2004 से गवर्नमेंट ने विड्रॉ की थी शायद इसी रूल के अंतर्गत। सरकार तो कोई भी नियम बना सकती है हम लोगों के सर्विस कंडीशंस के लिए। That's not part of our fundamental right per se. तो ये हुआ क्यों था? इंडिया में से जमींदारी सिस्टम था, आप लोगों को पता होगा। तो क्या था कि एक बंदे के पास मान लीजिए 100 पॉइंट्स ऑफ जमीन है, और उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं जैसे वैसल्स और वो होते थे सर्वेंट्स। वैसल्स जो है उनके पास बहुत जमीन है, सर्वेंट्स पास कुछ भी नहीं, सॉरी लॉर्ड्स एंड वैसल्स, उनके पास बहुत जमीन थी लॉर्ड्स के पास, वो नीचे लोग काम करते थे। तो इसीलिए चेंज किया गया लॉ। अब आजादी के बाद क्या होता है सर, जमींदार सिस्टम था। एज अ रिजल्ट एक बंदे के पास 100 पॉइंट्स है, एक के पास सिर्फ एक जमीन है। इट वाज हाईली डिस्प्रपोर्शनेट, जिसको मन किया क्राउन ने ग्रांट कर दिया, जिसको मन किया नहीं किया। तो जो लोग सालों से सर्विस कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। एज अ रिजल्ट ये वाली प्रॉब्लम आई। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉज पास किए। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक देम डाउन अंडर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 31। You cannot take away property without giving legitimate compensation. अब गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ हो गई थी इस चीज से उस टाइम, बहुत ज्यादा। सो एज अ रिजल्ट चेंज किया गया सिस्टम को, एंड आर्टिकल 31 को हटाया गया और उसको डाला गया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लिस्ट होती हैं, उसमें भी एक लिस्ट बना दी गई लास्ट में, जिसमें बता दिया गया कि जो इस पार्ट में डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, दोस थिंग कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द। तो काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स लॉ जो हैं उसी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, बस है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, आई वुड हैव शोन यू कि उसमें एक लिस्ट बनी हुई है लैंड रिफॉर्म लॉज की, कि ये लैंड रिफॉर्म लॉ फंडामेंटल राइट्स पे चैलेंज नहीं हो सकता। उसकी के लिए 31 को हटाया गया था 9 शेड्यूल में। हाँ 9 या मैं नॉट ओनली दैट रिमेंबर शेड्यूल नेम 9 शेड्यूल लिया है, आई हैव टू चेक इट। 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म है, 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म। हाँ सर, प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, हर स्टेट के एक्ट्स है उसके अंदर कि आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। ऐसी मैंने इंटरेस्टिंग केस किया था फ्यू इयर्स बैक, तेलंगाना एंड आंध्रा से रिलेटेड केस था ये। तो उसमें भी उनका आर्गुमेंट है, इट इज अ लैंड रिफॉर्म लॉ, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो मैंने आई हैव गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट टू माय सीनियर, सर वी कैन आर्ग्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ लैंड रिफॉर्म लॉ। तो क्यों, क्या आर्गुमेंट दोगे इस चीज के लिए? दिख रहा है लैंड रिफॉर्म लॉ है, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया है नया नया। मैंने कहा सर ऑल लैंड रिफॉर्म्स लॉ वर पुट इन द शेड्यूल, दैट वाज, इट वाज नॉट देयर। आई वेंट थ्रू द एंटायर लिस्ट, दिमाग में आया, मैंने कहा दे आर क्लेमिंग इट टू बी, हाई कोर्ट ने भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, डिवीजन बेंच ने भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट में मेरे सीनियर के पास आया था मैं, आई हैव टू दैट टाइम सर सेड की बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। सो जब हमारे रिटन स्टेट वो बने तो उसमें सबसे ऊपर वही पॉइंट गया कि इट इज नॉट अ लैंड रिफॉर्म लॉ, इट इज नॉट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हुए थे। अब हाई कोर्ट की पावर तो बहुत वाइड है, 226 में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, एंड कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड अगर आप एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इन पर्सन मूव कर जाओ हाई कोर्ट, इन पर्सन भी आपको हाई कोर्ट सुनेगा, ये नहीं है कि एडवोकेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेगा, बट यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रजिस्ट्री रन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग विस्टिंग हर चीज रजिस्ट्री कंट्रोल्ड है, हर चीज। तो रजिस्ट्री में सामने आपको परमिशन लेनी पड़ती है, सब प्रोसेस होता है एंड हो जाता है उसके बाद। उसमें तो इसमें फिर कुछ लिस्ट होगा ना इस पर्टिकुलर चीज के लिए इंडिविजुअल कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। Any matter sir, any matter, just have to get the, you have to follow the procedure and get any permission if required. हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझाया नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट खाली पार्ट 3 के वायलेशन के लिए जा सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज अपीलेट कोर्ट है वो।
लेकिन आपके पार्ट 3 के वायलेशन, पार्ट 3 क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर सरकार करे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वही तो इन्होंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है पार्ट 3 के लिए, हाई कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाई कोर्ट सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड वेरी वेरी वाइड पावर। हाई कोर्ट में आप टैक्सेशन मैटर को चैलेंज कर लो, आपको टैक्स नोटिस आया, यू फाइल एन चैलेंज, डिड यू फाइल अ रिट कि भाई गलत टैक्स नोटिस आया मेरे को। दो और रेमेडीज भी होती हैं एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है हाई कोर्ट की एक्सरसाइज पे, लेकिन कोई ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना हो सकती है, बिकॉज़ दैट। सर कैन आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज? यस यस सर। मेरे को सर एक चीज बताइए, यूजुअली डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रेमेडी टू पीपल हु आर लाइक इंडिजेंट, हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे, जो लीगल जो होते हैं ना काउंसिल्स, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे देम एक्चुअली। व्हाट यूजुअली हैपेंस कि रिच एक्चुअली माउ डाउन द जो पीपल होते हैं ना, पुअर पीपल जो आर हु आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पेन्यूरी। What actually happens? Does any, like, our constitution provide some kind of amnesty to those people who won't be able to kind of pay the fee to their legal counsels because of their penury? Correct, correct. So they have a remedy. What they can do is they can get legal aid. They have a remedy. For example, any person who cannot afford, there are two ways to go through it. If you are going through civil procedure, आप civil suit file कर रहे हैं, there is a provision to sue as an indigent person. File your case. क्योंकि civil suit पे क्या होता है सर, कोर्ट फीस होती है, ठीक है। हाई कोर्ट पे कोर्ट फीस क्या होगी, 100 रुपीज, जनरली 100 से 500 में रेंज करती है फॉर रिट्स। लेकिन सिविल सूट में ऐसा नहीं है। सिविल सूट में अगर मान लीजिए आपका जो क्लेम है गवर्नमेंट से वो 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए का कुछ परसेंट कोर्ट फीस जाएगा। सो कोर्ट फीस बहुत हैवी होती है ट्रायल कोर्ट, एंड काउंसिल फीस तो है ही ऑफ कोर्स। तो दो तरीके होते हैं। अब मान लीजिए आप कोर्ट फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, यू फाइल एज अ इंडिजेंट पर्सन। प्रोसीजर है प्रॉपर, अब प्रोसीजर फॉलो कीजिए एंड यू फाइल एज एन इंडिजेंट पर्सन। नाउ कमिंग टू लीगल एड, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में लीगल एड मिलता है, लड़कियों को फ्री है, चाहे लड़की। सेकंड क्वेश्चन पूछा, सपोज जैसे आपने कहा जी सर, मान लीजिए कि वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में केस फाइल करना चाहिए है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने कस्टमर को फीस जमा करना पड़ेगा। जब मैं लीगल मतलब काउंसलर ही अपॉइंट करने मेरे पास वो नहीं, तो मैं वो फीस कहां से जमा हाँ, इंडिजेंट पर्सन का स्यू कीजिए सर, आपको उस केस में इंडिजेंट पर्सन। अब लड़कियों के लिए कोई लिमिट नहीं है इंडिया में, दे कैन हैव अ इनकम ऑफ 5000 करोड़ पर मंथ, येट दे आर एंटाइटल्ड फॉर लीगल एड। और ठीक भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए राइट दिया गया। एंड बाकी जगह इनकम क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया में मिलेगा, इस क्राइटेरिया में नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में क्रिमिनल लॉ में हर बंदे को मिलेगा। आप क्रिमिनल में आप एक्यूज्ड हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके लिए गवर्नमेंट वकील लगाएगी। अब उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर विजडम एंड डिस्क्रिशन एंड आपकी फाइनेंशियल ऑफ कोर्स एबिलिटीज भी। लेकिन देयर इज अ वे, ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ जेब पे लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, यू कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट फॉर लीगल एड। एंड इन एप्रोप्रिएट केसेस कोर्ट सामने से, मेरे सामने हुआ है कि एक क्लाइंट आई कोर्ट में एंड शी सेड कि माय लॉर्ड्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू लिटिगेशन, एंड द जज ने बाकी कोर्ट में देखा, देयर वाज अ सीनियर लॉयर सिटिंग, he said Mr. counsel so and so, you take up the case for pro bono, you take up the case pro bono. So she got a counsel whose per appearance fees was maybe around 75,000 for free. So ऐसा भी हो जाता है, हाई कोर्ट अपने आप ही कितनी बार दे देता है आपको, देखता है। तो एक दो बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी ट्रायल कोर्ट में, लेकिन वो बिकॉज ऑफ माय हाई कोर्ट वर्क में टेकअप नहीं कर पाया, क्योंकि आई कैन नॉट लीव हाई कोर्ट। ये इशू होता है। ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है कोर्ट्स में आपको लीगल एड काउंसिल बनने की भी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप लीगल एड में जा भी सकते हैं, दोनों चीज। बट हाँ ये है कि व्हेन यू गो टू लीगल एड, आई वुड एडवाइज एवरीवन टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्टेज ऑफ देयर केसेस एंड you ensure that you take regular updates from the legal aid council. वो चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए उसकी। लीगल एड में अगर आप जा रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत टैब रखें अपने उस पे केस पे। अब सर यूनिवर्सिटी जनरली दो टाइप के केसेस ही फेस करेगी, ऑफ कोर्स अदर टाइप के फेस कर सकती है, आई विल एक्सप्लेन हाउ। पहला एजुकेशन, दूसरा सर्विस। आर्बिट्रेशन भी फेस कर सकती है यूनिवर्सिटी। लेट अस अज्यूम कि
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस बनाने का, लेकिन कच्ची बन गई, दीवार टूट रही है उसकी, और जो कॉन्ट्रैक्ट था आर्बिट्रेशन देने का उसमें लिखा हुआ था कि अगर ऐसा होता है तो आर्बिट्रेशन होगी, तो आर्बिट्रेशन भी करनी पड़ सकती है। बट जनरली जो केसेस आते हैं यूनिवर्सिटी के पास वो यही दोनों आते हैं। एनजीटी वगैरह में भी आता है, आप लोग के जब यहाँ पे आया था नॉर्थ कैंपस के बाद जो मेट्रो के साथ में एक जमीन है उसका भी केस आया था काफी सालों पहले, वो सब भी होते हैं। बट जनरली इट इज सर्विस एंड एजुकेशन ओनली। एजुकेशन मैटर्स में स्टूडेंट्स गवर्न होते हैं, सर्विस में आप लोग गवर्न होते हैं। सर्विस के भी दो पार्ट्स हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, उनके सर्विस कंडीशंस अलग होती हैं। टीचिंग पे सीसीएस रूल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, नॉन टीचिंग पे दे आर एप्लीकेबल, बिकॉज टीचिंग के लिए ये है कि एक सीसीएस में क्या है कि आप गवर्नमेंट का क्रिटिक नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन अगर फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस की है एंड गवर्नमेंट का क्रिटिक नहीं करने दे रहे आप, तो यू आर एक्चुअली बेसिकली हिंडरिंग द एजुकेशन, सो फैकल्टीज आर इम्यून फ्रॉम इट। लेकिन आप लोग नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल द वे अप टू रजिस्ट्रार, एवरीवन इज under that CCS regime. सर आर्बिट्रेशन के जजमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है? हाँ मैम, बट आर्बिट्रेशन प्रॉब्लम मैम ये होती है कि आर्बिट्रेशन सिविल सूट नहीं है, आई डिफिकल्टी। आर्बिट्रेशन मैम क्या है कि आर्बिट्रेशन इज बेसिकली a private dispute resolution thing. For example, you and I have a dispute and we basically refer it to arbitration. At that, a third party, for example, sir, will sit and pass an award. So, and that award can be challenged under Arbitration and Conciliation Act, Section 34. But that is not an appeal. There are very, very restricted grounds for a challenge of arbitration award. I generally do not recommend for any kind of service matter, any kind of right which you do not have to necessarily go to arbitration to go to arbitration. Where you can afford, file a civil suit. Because you will have a remedy all the way up to Supreme Court. By the way of appeals, not challenge. चैलेंज बहुत छोटा है, बहुत छोटा। 34 में बहुत बहुत कम ग्राउंड्स हैं आर्बिट्रेशन में। साउ वाले में बताता हूँ आपको, साउ में ये भी पॉइंट है उनका कि दे हैव आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म, यू गो टू आर्बिट्रेशन बट फैकल्टी इज नॉट एग्रीइंग टू इट। आर्बिट्रेशन का बड़ा कैसे करोगे? एंड आर्बिट्रेशन एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। इफ यू सी टेक्निकली, व्हेन आई एम गवर्न्ड बाय सर्विस कंडीशन, गवर्नमेंट इज माय इज एम्प्लॉयर, व्हाई विल आर्बिट्रेशन कम इनटू द पिक्चर? आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट देखेंगे तो उसमें भी कुछ जगह आर्बिट्रेशन लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप लोग डीयू के स्टैट्यूट्स, कभी टाइम मिले आप लोग को, उसमें कुछ जगह आर्बिट्रेशन लिखा है बट यूनिवर्सिटी एनफोर्स नहीं करती उसको, और उसमें लिखा हुआ है। हर्ष एक ब्रेक ले सकते हैं? हाँ हाँ यस मैम। पार्टिसिपेंट्स हम लोग थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रीस्टार्ट। ठीक है, वी मीट आफ्टर 10 मिनट्स। राइट मैम। थैंक यू। ओके मैडम।
Online participants, we are starting again. Are you back? Online participants? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, जी जी। जी मैडम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप Yes, sir. Yes, madam. We could never relish the samosa and kachori. तो यहाँ आगे बढ़ गया, आगे भी बढ़ गया। also continuing. चलिए, thank you. Let's start. Ma'am, कुछ कहना चाहते हैं? कोई कुछ कहना no, चाहते no. हैं?
सर्विस मैटर्स में क्या क्या आता है? सर्विस मैटर्स आर बेसिकली व्हिच गवर्न योर सर्विस कंडीशंस। आपका प्रमोशन, आपकी अपॉइंटमेंट, आपका डिसमिसल, आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन नहीं हो रहा था एमएसीपी, ठीक है, आइदर वन ऑफ दोस थिंग्स शुड फ्लो, या तो वैकेंसी आ जाए, डीपीसी बने, प्रमोशन हो जाए आपका, वो आप हाईएस्ट पोस्ट पे हैं ऑलरेडी, प्रमोशन की संभावना नहीं है, तो आपका एमएसीपी होगा। एमएससी फुल सर, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसमें नुकसान होता है, आपको पता है? डीसीपी बनती है, जैसे मान लीजिए आपकी लेवल 10 पोस्ट है, ठीक है, अगला प्रमोशन लेवल 12 पोस्ट पे होना है सीधा, डीसीपी आपको लेवल 12 पे थोड़ी भेजेगा, सर डीसीपी आपको 12 पे भेज देगा, लेकिन एमएससी आपको 12 पे नहीं भेजेगा, एमएससी आपको 11 पे भेजेगा, नेक्स्ट ग्रेड। इसे फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करती है, बट नॉट टू द एक्सटेंट अ प्रमोशन वुड हैव गिवन टू यू। मेरे क्या सर्विस लॉ करते करते मैं हो जाऊंगा। तो अपॉइंटमेंट की एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लेते हैं आप एओ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है एओ की, चलिए ठीक है, एओ की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होनी है, एओ का प्रमोशन नहीं होता ना, नीचे ना फीडर कैडर, अगर वो फीडर कैडर में आया है नहीं एओ आया है सीधा, एओ इज द हाईएस्ट, एओ इज इक्विवेलेंट टू एआर डायरेक्ट, हां टैलेंट भी आता है और प्रमोशन से भी आता है। वो डायरेक्ट की बात है। हाँ मैं कह रहा हूँ एओ से प्रमोशन का स्कोप नहीं है आगे, आगे उसे आगे AR के लिए सर, AR के सर, एआर के लिए AR के लिए सर, हाँ वो बड़ा कॉलेज में नहीं हाँ उसके लिए आपके आई थिंक सिलेक्शन प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, करेक्ट, कॉलेज आपका और प्रमोशन रेवेन्यू नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट होनी है एओ की, ठीक है, देयर इज अ क्वालिफिकेशन विद स्टेट्स की आपको एमए होना चाहिए, आई एम रैंडमली अज्यूमिंग, ठीक है, हाँ मान तो मैं आई एम रैंडमली एमए होना चाहिए आपका कंपल्सरी। अब मान लीजिए एक पर्सन है वो एमए नहीं, वो एमए उसने इग्नू से किया है, अब रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं नहीं भाई एमए शुड बी फ्रॉम रेगुलर कॉलेज, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। बंदा इग्नू से एमए करके आ गया, आपने उसे इंटरव्यू ले लिया, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, जब जीबी ने देखा तो कहते नहीं ये तो गलत है, हम अप्रूव भी नहीं करेंगे इसको। अब सर्विस क्वेश्चन अराइजेस, ऐसे अपॉइंटमेंट के मुद्दे चैलेंज होते हैं कोर्ट में। एक और एग्जांपल देता हूं मैं टीचिंग स्टाफ के रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सिटी वाले समझ पाएंगे थोड़ा चीज। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी अपॉइंट होती है तो एलाइड सब्जेक्ट्स में भी हो सकती है, हाँ इंग्लिश में भी है एलाइड सब्जेक्ट, तो मुद्दा चल भी रहा है यूनिवर्सिटी में, तो एलाइड सब्जेक्ट से भी हो सकती है अपॉइंटमेंट। अब इंग्लिश फैकल्टी ने एक ईमेल निकाला हुआ है आप लोगों में कि नहीं करना है एलाइड सब्जेक्ट्स में, करेक्ट? इंग्लिश में से लाइक सब्जेक्ट क्या हो सकता है? लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल ये जो आया है इसका मतलब कंट्रोवर्सी बड़ी, पहले इस तरह कोई डिफाइन ही नहीं था, ऊपर दे देते, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा क्या ये एलाइड सब्जेक्ट है या नहीं है, उसके ऊपर बात उठने लगी है। फिजिक्स में कोई अपॉइंट हुआ है तो वो मैथ्स से उसने वो कर रखी है। ये these are the questions ना जो उठ जाते हैं, जब इसी के लिए ईमेल सर्कुलेट होते हैं, लेटर सर्कुलेट होते हैं कि अब तो डायरेक्शन ईमेल से आने लगी, पहले तो लेटर से आती थी, करेक्ट, डिपार्टमेंट ईमेल भेज देता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस को कि प्लीज सी टू इट। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि मान लीजिए किसी के पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, जी सर, ठीक है, और उसका मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो गया ओवरलुक या किसी वजह से, और बाद में कोर्ट में चैलेंज होता है, कोर्ट कहता है कि नहीं क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट कर दी है तो लेकिन कंटिन्यू। सर ये भी इक्विटी के बेसिस पे होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, लेट अस अज्यूम कि आपने एक क्लर्क अपॉइंट किया, ठीक है, क्लर्क की रिक्वायरमेंट थी 12th पास होना चाहिए, उस टाइम से 11th पास कर कितने आपने अपॉइंटमेंट से पुश कर दिया, कौन से वर्ड से 12th भी क्लियर कर ली। अब यहाँ पे इक्विटी का क्वेश्चन आ जाएगा, कोर्ट विल गो इनटू इक्विटी कि क्या दे क्या ना दे, लॉ नहीं है इस पे कोई देना ही पड़ेगा या नहीं देना, वो इक्विटी पे आ जाएगा। इक्विटी मतलब बैलेंस करना, करनी कोर्ट हर चीज को देखता है कि भाई व्हाट इज जस्ट एंड रीजनेबल, क्योंकि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है ना, प्योरली कोर्ट ऑफ जस्टिस है। एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया जैसे डिसीजन, मान लीजिए कोर्ट ने कहा ठीक है अभी अब ये कंटिन्यू करे, जी जी तो क्या फिर उस केस में ऑप्शंस जो एम्प्लॉयर उसके पास रहेगा कि वो माने या ना माने? नहीं सर, अगर हाई कोर्ट ने कमांड दे दी तो माने पड़ेगा। कोर्ट हो जाएगा। बुला लेंगे मैम, एओ को ही बुलाएंगे, एओ को ही बुलाएंगे कोर्ट में। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में तो आप लोग सेफ है। पूरी देगा और संजय जी कहा है
देखिए वो रजिस्ट्रार नहीं जाना चाहिए, उसके लिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके हिसाब से रजिस्ट्रार वर्सेस की होता है, ये नहीं कि रजिस्ट्रार में आता है। आप ये बताइए हेड ऑफ ऑफिस का करेक्ट मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक द रिस्पांसिबिलिटी। हम देखेंगे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जनरली सस्पेंशन और टर्मिनेशन ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेन चुराने वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बहुत छोटी सी चीज है बट उठाने को जीबी उठा सकती है वो मुद्दा, कैसे उठा लिया अपने ऑफिस का पेन, घर कैसे ले गए। तो दीस काइंड ऑफ इश्यूज कम इनटू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब जैसे मैम ने एग्जांपल दिया वो वाला एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपने, मैंने एक मैटर किया था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, नाम नहीं लूंगा मैं किसी पर्सन का, ठीक है। देयर वाज अ फाइनेंस ऑफिसर, कुछ उसने गलत अप्रूव कर दी चीजें, नॉट इंटेंशनली, या मैंने नहीं बोला इंटेंशनली किया, उसने गलती में हो गया उससे, एंड दैट कॉस्ट सब्सटेंशियल लॉस, मिसकंडक्ट का शुरू हो गया उससे, बिकॉज दैट इज अ मिसकंडक्ट। उसने भी ड्यूटी को डेरिवेक्शन में किया जिसकी वजह से लॉस कॉज हुआ यूनिवर्सिटी, करेक्ट। अब उसमें कल को जजमेंट आएगा तो मान लीजिए उससे जीबी निकाल देती है कॉलेज से, लेकिन हाई कोर्ट भी बोल सकता है कि भाई प्रोपोर्शनल नहीं है, निकालना गलती में हो गया, देयर आर एविडेंसेस टू द इफेक्ट कि गलती में हुआ है, तो लेट हिज टू इंक्रीमेंट बी स्टॉप और लेट हिम नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एक्सक्लूजन। ये सब भी कर सकता है कि उसकी पनिशमेंट को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दे। प्रमोशन मैटर्स, वो तो आप सबका मुद्दा बनेगा ही आज नहीं तो कल। प्रमोशन में क्या होता है, डीसीपी बननी होती है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है। अब सिलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी बाहर वालों के लिए बैठती है, अंदर वालों के लिए उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। काफी इंस्टीट्यूट में प्रमोशंस के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। इसके बाद आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट में ग्रेचुटी, पेंशन, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। पेंशन इज नॉट अ बाउंटी, आर्टिकल 300A में प्रोटेक्टेड है पेंशन। आपकी पेंशन मर्जी नहीं है सरकार की, पेंशन आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार आज भी है। अगर किसी से कुछ रिकवरी करनी हो पेंशन से कर सकते हैं। रिलीफ इन पेंशन आज जो आजकल यूनिवर्सिटी में चल रही है रिकवरी 1400 1400 1400 900 वाली, आप लोगों को पता होगा। रीडर में जो 5 साल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके मैंने 3-4 केस फाइल किए हैं हाई कोर्ट में, मेरे नाम पे लगे हुए हैं। कर सकते हैं रिकवरी पेंशन। आइडियली मैम मैं भी उस पॉइंट पे आऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए वाला पॉइंट, मैं वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। मुझे पता है मंथली पेंशन से ग्रेचुटी से मैं किसी से मेरा अलाउ I'll tell you, but I'll tell you, and the faculty members, I would say that they have not been legally very active. Had they been, they would not have been, there would have been no recovery. Correct. That is the law. Correct. क्या सर? अब चैलेंज कर सकते हैं 5 साल से ऊपर जब हो गया। क्या सर? मतलब इनका ये कहना है कि पेंशन से रिकवरी होगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि पेंशन से नहीं होती है, लेकिन जो उसका डीएनएस पोर्शन है उससे रिकवरी हो सकती है, होती है, मेरे बदल की नहीं है, बस ये क्या हाँ इससे रिकवरी पॉसिबल है। पर्सन ने दिए ना हो तब भी तो वो भी सिर्फ 5 की तरह। तो अब एमएसीपी स्कीम आप सबको पता है, मैं डिस्कस भी किया मैंने अभी, इसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होता है बट उतना नहीं होता। इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पता है आप लोग को? उसमें एक डिपार्टमेंट होता है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, तो उनका घूम घूम के इंफॉर्मेशन वगैरह फैलाते हैं। दैट डिपार्टमेंट हैज बीन क्लोज डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ अ कैबिनेट डिसीजन, ठीक है। तो कैबिनेट ने सरप्लस डिक्लेयर हो गया, सरप्लस पर डेपुटेशन ऑर्डर आएगा, डीम डेपुटेशन पे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन सर्विस, डीम डेपुटेशन में 3 साल रहेंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल आ चुका है उनकी पोस्ट को डिक्लेयर करने का। अब उनके डीसीपी रुकी हुई थी कुछ सालों से, प्रमोशन पोस्ट है नहीं है कुछ नहीं पता, डीसीपी करने की जगह सबको एमएसीपी देके भगा दिया। डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन तो आफ्टर 10 इयर्स ही तो मिलेगा ना। हाँ मैम, बट पोस्ट पे 14 सालों से वो अलग चीज है। बट एंड वैकेंसी भी एग्जिस्ट करती है प्रमोशन के लिए, तो by law they should have first conducted DPC, selected the candidates, gave them promotion, and remaining should have got MSc. And they call on deputation officers. अब भेज दिया, deputation order yet to be passed, but वो surplus orders have been passed. तो वो केस हम कर रहे हैं, हमने कैट में अर्जेंट लिस्टिंग करवाई है उसकी, so that will be a very interesting matter. तो कैट has assured कि हम करवा देंगे, अगर ऐसा होता है तो we will call them from deputation. Pay protection,
पे प्रोटेक्शन किस केस में एप्लीकेबल होता है, आप मेरे को बता पाएगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जांपल आप क्लास बी ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, आपने डीओ में अप्लाई किया, हो गया आपका, आपका क्लास सी में गए लेकिन आप, तो पे प्रोटेक्शन नहीं होती, आपको सेम उसमें आना होता है, सेम लेवल पे। पे प्रोटेक्शन उसमें कुछ कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस से गवर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन उतना पे प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा आपका जब आप क्लास बी में आप ड्रॉ कर रहे होगे, लेकिन वरना पे प्रोटेक्शन होती है अगर आप सेम लेवल पे जाओ। फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री में आप स्केल पे थे एग्जामिनिंग 40,000 से 70,000 के, यू आर ड्राइंग 50,000, यूनिवर्सिटी में भी सेम स्केल एप्लीकेबल है, तब वो 40 पे स्टार्ट नहीं करेंगे, 50 पे वो कंटिन्यू कराएंगे। रिफिक्सेशन ऑफ पे एंड रिकवरी ऑफ एक्सेस पे, ये वही वाला मुद्दा है, चल रहा है आजकल 1400 वाला। मैं आइलते इसमें आऊंगा डिटेल में, आगे बना रखा है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। एजुकेशन मैटर्स में एडमिशन के मुद्दे होते हैं, आपने एडमिशन नहीं दिया किसी को पीएचडी में, मैलाफाइड हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। I have a question here, please. यस सर। If a disciplinary committee comes to a conclusion to impose a minor penalty to any delinquent, for how long such penalty shall be imposed? सर ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कंडीशन लगाते हैं कि भाई 2 इंक्रीमेंट रुक जाएंगे इसके, तो नेक्स्ट 2 इंक्रीमेंट तक वो रुकेगी, वो कंडीशन रहेगी, उसके बाद हट जाएगी। For example, there are just like जैसे कि entry level post में जो सैलरी मिलती है वो भी कर सकते हैं उसमें माइनर पेनल्टी में, तो for how long it should last then? सर वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर में लिखा क्या है, अगर आपको उस पे ले आए दोबारा उठा के एंट्री लेवल पे फिर आपका दोबारा पहला प्रमोशन, पहला इंक्रीमेंट आएगा, फिर दूसरा इंक्रीमेंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, द क्लॉक टर्न्स बैकवर्ड्स उस केस में। फिर मतलब उसका ये मान लीजिए कि आपकी अपॉइंटमेंट आज ही हुई है, ये मान लीजिए उसमें आप जो प्राइमा फेसाई बनेगा उसमें ये बनेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट आज ही हुई है। Okay, right, sir. अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, प्रॉक्टोरियल इंक्वायरी, द स्टूडेंट्स में ड्रेडेड वर्ड है प्रॉक्टर, प्रोटेस्ट किया कुछ किया, प्रॉक्टर साहब का नोटिस आ जाता है कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉक्टर के भी स्टैट्यूट्स में रूल्स दे रखे होते हैं कि हाउ प्रॉक्टर हैज टू कंडक्ट। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया, दे वायलेटेड सर्टेन कंडीशंस, मैन हैंडल कर दिया किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को, दैट इज अ मिसकंडक्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय विल कंप्लेन टू द प्रॉक्टर, प्रॉक्टर फॉलोइंग द स्टैट्यूट्स विल इशू नोटिस एंड कॉल फॉर हियरिंग, प्रॉपर प्रोसेस चलेगा, एविडेंस होंगे, सब कुछ होगा एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड इन कॉन्सोनेंस विद नेचुरल जस्टिस। अब प्रॉक्टर इंक्वायरी में क्या होता है कि वो लैप्स हो जाता है, उसमें लिखा है 3 नोटिस भेजने हैं, आप 2 ही नोटिस भेजे और एक ईमेल भेज दिया आपने, टेक्निकली आपको 3 नोटिस भेजने चाहिए थे। तो हाई कोर्ट में लोग ये पॉइंट, मैं खुद जाता हूँ ये पॉइंट बना के कि भाई आपने ये प्रॉक्टर साहब ने गलत किया कि एक ईमेल भेज दिया, 3 लेटर हेड में नोटिस आने चाहिए थे मुझे प्रॉपर। एंड कितनी बार तक प्रॉक्टर जो होते हैं 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन में आ जाओ हमारे सामने, दैट इज अनरीजनेबल। मान लो कोई बंदा आउट ऑफ दिल्ली रहता है, हाउ कैन यू से कि भाई 2 दिन प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि भाई रीजनेबल टाइम 1 वीक 10 डेज, या मान लीजिए छुट्टी के दिन संडे को बुला लेते हैं, फ्राइडे को नोटिस भेजा, संडे को बुला दिया, कैसे आएगा बंदा? दीज आर द काइंड ऑफ लैप्सेस व्हिच हैपन। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि ऑर्डर ठीक से नहीं लिखते। प्रॉब्लम बताऊं क्या है? द प्रॉक्टर फाइंड्स नो मेरिट इन द सबमिशंस ऑफ द स्टूडेंट, हेंस शी इज कन्विक्टेड। अरे यू हैव टू डिस्कस द एविडेंस व्हिच इज अवेलेबल स्टेप बाय स्टेप। तो some time back we were discussing with my colleagues at the high court कि university should appoint one AR judicial, let his job be to assist registrar and proctor in writing judicial orders. Appoint one lawyer as AR judicial, मतलब take him in service and he will of course surrender his sanad and everything, bring him into regular job and he should pass the orders, and then registrar should of course he should draft the orders and then registrar should see कि हाँ भी सही तरीके से लिखा है हर चीज है। So that would substantially reduce the university cases. So I was discussing it with my few of my colleagues at the High Court. Everybody said, "Oh, you should write to registrar." nahi. Who am I to suggest the registrar? But there is a panel of advocates. Yes. For in that cases, their opinion is sought first. On that basis, decision is arrived at. Correct, sir. But sir, court will not go into that. The court will see what proctor has written into the order. राइटिंग स्किल के लिए कह रहे हैं, Judgment writing. स्किल्स के लिए कह रहे हैं, ताकि आप समझे कोई इस तरह का डिसीजन होगा। आपकी आवाज नहीं जाती है, हाँ वाला नहीं पता लगता, थोड़ा तेज बोला करो आप। मैं यही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर इस तरह का होता है, देयर इज अ पैनल ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, अगर कोई इस तरह का जजमेंट मान लीजिए कि करना है तो ड्राफ्ट करके देते हैं,
उसके बाद ही वो फाइनल होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीसीजन उसके बाकी का हमारे संजय जी ने वो करते हैं, मैं नहीं कहा है। अब तो लीगल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती। इनको सर अब एक मुद्दा सर आपका आता है अटेंडेंस का, स्टूडेंट्स का। यूनिवर्सिटी के रूल्स बोलते हैं 66 से 75%। लेट मी टेक अ कॉलेज नेम, शहीद भगत सिंह। एवरीबॉडी नोस क्या हो रहा है ना? एवरीबॉडी नोस शहीद भगत सिंह। So, क्या मुद्दा है कि अंडरटेकिंग विल ओनली वर्क इफ इट इज एन ऑड सेमेस्टर एंड द अटेंडेंस इज अबव 40%, सो दैट अगले सेमेस्टर में से कवर करो। इवन सेमेस्टर अंडरटेकिंग का कोई सेंस ही नहीं बनेगा और खासकर फाइनल ईयर में हो तो। अब दिक्कत आ रही है, मान लो कि 7, 10, 15, 20% अटेंडेंस है। प्रॉपर लिस्ट रिलीज हुई है पब्लिक डोमेन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग व्हिच इज रिविलेशन। पब्लिक डोमेन में लिस्ट अवेलेबल है शहीद भगत सिंह की वेबसाइट पे। इतने लोगों को डिटेल कर दिया गया है और साथ में वो अपलोड किया हुआ है फॉर्म। सो एंड उसमें आप काफी न्यूज़पेपर्स ने भी कवर भी किए सेम चीज। अगर आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे आप में से कोई, तो आप देखेंगे ये वाला मुद्दा आता है कोर्ट में कि अटेंडेंस भी हमें शॉर्ट कवर से यूनिवर्सिटीज डिबारिंग अस। तो दिस आर वेरी कॉमन मैटर्स। पीएचडी स्टडीज में बहुत ही इंट्रिकेट मैटर्स आते हैं। पीएचडी स्टडीज बड़े इंट्रिकेट मैटर्स आते हैं। सुपरवाइजर गलत अपॉइंट हुआ है मुझे, इस सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज नहीं है सब्जेक्ट में, दूसरा सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज थी, इसका पॉइंट होना चाहिए था, मैलाफाइड है। एक मुद्दा ये आ सकता है कि जानबूझ के मुझे बोर्ड ऑफ स्टडीज ने नहीं अपॉइंट नहीं दी पोजीशन। कमिटी बैठी, कमिटी ने कंसिडर ही नहीं किया, इतना अच्छा प्रपोजल था मेरा। ये सब चीजें आते हैं। अब मान लीजिए आपके जो सुपरवाइजर साहब थे वो गुजर गए, अब नए कोई आपकी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं जो बंदा उस एक्सपर्टीज में है। यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर देती है किसी रैंडम पर्सन को। अब हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाउ ही विल सुपरवाइज द पीएचडी। यूनिवर्सिटी शुड टेक मेजर्स, आई शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। यूजीसी रेगुलेशंस उस पे देखा जाता है, सो कि क्या कहती है यूजीसी रेगुलेशंस पीएचडी, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर रिट बनती है, ग्राउंड्स बनते हैं, एंड द हाई कोर्ट्स देन कॉन्सिक्वेंटली पास ऑर्डर्स। इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोसेस होता है ना, इट्स वेरी कॉमन। सर जैसे कई बार क्या है, थीसिस बिल्कुल लास्ट कंप्लीट होती है, वो सुपरवाइजर डिले करता है, मना करता है, या थोड़ा सा आगे पीछे करता है, या फिर कई बार जैसे टॉपिक जो चूज किया है उस टाइम उसने कंसेंट दे दी किसी किस पे काम करो, बाद में वो कहते हैं कि टॉपिक आपने वो रिलीज पे पहले ही काम हो चुका है, तो फिर उस टाइम कैसे सुपरवाइजर? सर कुछ चीजें इंस्टीट्यूशन लेवल पे सॉर्ट करनी चाहिए। कोर्ट हर मुद्दे पे नहीं घुसेगा। कोर्ट विल आल्सो से कि सी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ एकेडमिक डिस्क्रिप्शन है उनका फैकल्टी का, हम वी कैन नॉट सिट इन द शूज ऑफ अ फैकल्टी। फॉर एग्जांपल आई टुमारो बिकम अ हाई कोर्ट जज, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, आई डिड माय एलएलबी, आई नो लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई नो द लॉ। Tomorrow a PhD physics PhD student approaches my court that your lordship has to pass the order. How will I understand that I have studied 11 12? That is no match for PhD. I will say that no, I cannot. What does the chairperson of the center says? What the dean says? I will call for their affidavits. And then the student, I will also ask the student to submit an affidavit of any professor who is qualified in the field. And subsequently, I will pass an order. A judge cannot sit in the shoes of the professor or a regular administrative person. So that is very important thing to understand in PhD studies. So college level पे नहीं आएगा आप लोगों को, but university level पे that is very common. Examination results से college level में भी आएगा। आप लोग रिजल्ट निकालते हो, किसी बंदे का एब्सेंट मार्क को क्या जाए, consequently अप्रोच करता है यूनिवर्सिटी को, नहीं मानते, he has to challenge, he shows his admit card, he shows his metro card history, एविडेंस दिखाया जाता है कोर्ट में। आप लोग सोच नहीं सकते किसी तरह के एविडेंस एनेक्स हो सकते हैं। आई कैन शो माय ट्रेन टिकट इफ आई एम कमिंग आउट ऑफ दिल्ली, गूगल मोबाइल लोकेशन कि आई वाज एट द सेंटर। नहीं वो अटेंडेंस दे देते हैं हम लोग। नहीं सर, डुप्लीकेट मिल जाती है। हाँ आई कंप्लीटली एग्री सर, इतना जरूरत पड़ता है अटेंडेंस के लिए। आई एग्री सर, बट ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जो छोटे मोटे यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं सॉर्ट हुए, तो दे वेंट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट ने कहा नहीं भैया एविडेंस है। नॉट ओनली ड्यूज रिस्पेक्ट, दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कभी आईपी ने एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो ऐसे केस भी हुए हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो ऐसे केस भी हुए हैं, कॉरेस्पोंडेंस का एग्जामिनेशन सेंटर है, हस्बैंड आता है, वाइफ को छोड़ के जाता है जी, एब्सेंट आती है, मियाँ जी अटेंडेंस लेने जाते हैं, वो वाकई एब्सेंट है ही नहीं, है ही नहीं। ये फैक्ट केस है ये। केस है सर, तो उसमें लोकेशन भी नजर आ जाएगी, सब कुछ नजर आ जाएगी, कोर्ट ऑफ लॉ जो स्प्रेड करेगा कंसीडर, वो तो ये सब कर कर आके कहेगा जी दो, हाँ जबकि वो जनाब अंदर ही नहीं घुसे, वहां पे तो थे गेट पे। हाँ
ये सब इश्यूज आ जाते हैं। एग्जामिनेशन रिजल्ट तो एवरीबॉडी फेस। हाँ जी सलीम जी। सर आई हैव 2 क्वेरीज। आपने जो मैटर्स बताए ना, कई सारे मैटर्स करे, उसमें एक तो सर्विस मैटर और एक एग्जामिनेशन रिजल्ट। सर्विस मैटर में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय का कोई ग्रीवेंस था, सपोज ही इज आस्किंग फॉर समथिंग एंड ही रोट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद एम्प्लॉय कोर्ट में जाता है, देन ही रिसीव्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट यू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। इज इट टेनेबल? सर अगर एम्प्लॉय ने रिप्रेजेंटेशन दी है इंस्टीट्यूशन को एक बार 2 बार, उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है। अगर एक बार भी दे दिए रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टिंग कि भाई मेरे को ये बेनिफिट, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम प्रमोशन मैटर्स ओनली, प्रमोशन के लिए से रिक्वेस्ट किया 2-3 बार नहीं हुआ उसका, he can leave it. He has a right. यू माइट बी अवेयर अबाउट द केस, एक ओएम आया था 3 मार्च 2023 में, कन्वर्जन फ्रॉम एनपीएस टू ओपीएस, एंड उसकी Yes. कुछ डेडलाइंस थी, टाइमलाइंस थी। एम्प्लॉय को 31 अगस्त तक देना है, एम्प्लॉयर को 31 अक्टूबर तक आगे फॉरवर्ड करना है एनएसडीएल को, व्हिच वाज एक्सटेंडेड अप टू 30th November. Neither the employer responded, and the deadline is also over. And the employee approaches court of law for the remedy because he thinks that his case is justified in the light of that OM issued by DOPPW. Now the employer issues a memo. सर एम्प्लॉय अप्रोच कर सकता है कोर्ट, कोर्ट विल ग्रांट और नॉट, दैट इज डिस्क्रिशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। जैसे पूरी फाइल आप पढ़ेंगे अगर, तो कितनी बार दिखता है कि ही ट्राइड टू कम्युनिकेट विद द इंस्टीट्यूशन लेकिन वो नहीं हो पाया जेन्युइनली, या ही मेड सर्टेन रिप्रेजेंटेशन जो नॉट कंसीडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन केसेस में कोर्ट एक ही चीज का है कि while approaching the court of law you did not inform us. नहीं सर, कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है सर, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है सर जी। अगर मान लीजिए बताइए सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। एग्जामिनेशन रिजल्ट का जो आपने टॉपिक दिया ना सर, एक क्वेरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कई सारे आरटीआई आए, ग्रीवेंस आया और सीपी ग्राम पीजी पोर्टल पे भी गया। द कंटेंशन ऑफ द कैंडिडेट वाज दैट दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। आपने जो एग्जामिनेशन में डाला है ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट वाला था, एंड उसके मेजर पार्ट जो है, सपोज 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो मेजर पार्ट जो है वो किसी और एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं। He was not questioning about the integrity or the procedural lapses or anything else. Just because the repetition of the question, whether his contention is valid and can be heard or outrightly dismissed. सर अब ये सबके लिए थे सारे जी। सर इसे कोर्ट को देखना पड़ेगा। नहीं, प्राइमा फेसी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ रिट, लेकिन हाँ कोर्ट देखेगा उसको। कोर्ट को ऐसा लगता है कि मान लीजिए कल एग्जाम हुआ, एक हफ्ते पहले 90% क्वेश्चन सेम आ गए हैं, और अगर मान लीजिए एग्जाम दिया गया है, पॉइंट लिया गया है कि पेपर लीक हो गया था या एडमिनिस्ट्रेटिव मैलाफाइड है कुछ, उस केस में कोर्ट कर सकता है। ये सलील जी पूरा फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, बिना फैक्ट्स की जजमेंट लीक नहीं हुआ, एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से कंडक्ट हो गया है, बट वो और भी पहले पूछा जाता है। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। एसएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इवन यूपीएससी के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, रेलवे बोर्ड के रिपीट होते हैं, बिकॉज़ वी डोंट नो क्या होता है सर, आपको पता ही है, यू आर डीलिंग विद दीज मैटर्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो क्वेश्चंस डिफरेंट जो है पर्सन सेट करते हैं। हो सकता है 4 मेरे पास आए, कोई सा भी एक सेट जो है जो फाइनली वहां पे अप्रूव होके जा रहा है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट क्वेश्चन बुकलेट, काफी सारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो अब किसी एक फैकल्टी ने जो क्वेश्चन बनाया, वो भी कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना सेम, मतलब जो है चांसेस होते हैं वो कहीं से भी लाएंगे क्वेश्चन, तो रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट अगर एग्जामिनेशन जो है ना वो फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, तो इसको क्या मतलब लीगली ये टेनेबल है या नहीं? आई वाज जस्ट लीगली आई विल नॉट से इट इज अ वेरी स्ट्रांग केस, जितना मैंने आपके फैक्ट्स समझ पाया हूं, आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी स्ट्रांग केस। बट सर जाना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब कोर्ट एंटरटेन करेगा नहीं करेगा उसके चांसेस बताना बहुत मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग टू माय लीगल ओपिनियन केस इज नॉट वेरी स्ट्रांग ऑन द गिवन फैक्ट्स। अब ऑफ कोर्स अगर एविडेंस आ जाता है कि मैलाफाइड है एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर कोई लीक होने का एविडेंस आ जाता है, वो केस अलग है, बट on the prima facie level bare examination of facts, it is not a very strong case.
Thank you, sir. Of natural justice. This is one of the most important thing which proctor every person should follow while passing any kind of order. Punitive order, for example, disciplinary inquiry में order pass कर रहे हैं, representation का order pass कर रहे हैं. पहले टाइम पे क्या होता था? अब तो AFT बन चुका है, Armed Forces Tribunal. At earlier times when AFT was not there, the way prevalent was that people used to present their service matter before the Judge Advocate General of Army. He used to hear them. They had a right of audience before him, and consequently he used to write in a form an opinion, and the matter was sent to General of Army, Chief of Army Staff, who decided it. So that order had to be in consonance with natural justice. Every order has to be in consonance. अब मान लीजिए मैं किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाता हूँ, उस पर सिर्फ इंक्वायरी बैठती है, आप उसको बिना सुने ऑर्डर पास कर देंगे, वो गलत है. आपने उसको नोटिस नहीं दिया, गलत है. एक दिन का टाइम दे दिया अपना डेपोजिशन देने के लिए, गलत है. क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई टाइम नहीं दिया, गलत है. आपने इंक्वायरी कमेटी में एडवोकेट अपॉइंट कर दिया और उसको आप एडवोकेट अपॉइंट नहीं करने दे रहे हो, नैलिफाइड. आई एम टेलिंग ऑन द ग्राउंड जो नेचुरल जस्टिस में आ सकते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में हमने 3 एडवोकेट्स बिठा दिए और वो बेचारा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है खुद. मान लीजिए एलडीसी है, वो एलडीसी बेचारा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 एडवोकेट्स हैं, उससे एक के बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे. सो मैलाफाइड दिखता है सबसे. सो शो कॉज एंड रिप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने इशू किया नोटिस, आपने कहा भाई तुम गलत हो, खत्म. अब मान लीजिए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का नोटिस इशू होता है तो कोई इंक्वायरी कमेटी फॉर्म होती है जो अपना डिसीजन देती है प्रॉपर. इंक्वायरी कमेटी चार्जशीट सप्लाई करेगी, डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगी, आर्टिकल ऑफ चार्जेस सप्लाई करेगी. आर्टिकल ऑफ चार्जेस को अपनी स्टेटमेंट देगा. कितनी बार प्रिंसिपल पे हो जाते हैं एलिगेशंस कि प्रिंसिपल ने मिसकंडक्ट किया, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, तो प्रिंसिपल के जीबी बनाती है, प्रिंसिपल देन हैज टू, और नया प्रिंसिपल अपॉइंट हो जाता है उस टाइम पे, एंड प्रिंसिपल देन हैज टू सबमिट ऑल दीस थिंग्स, रिप्लाई वगैरह. कितनी बार होता है कि प्रिंसिपल इंडिया से बाहर चले जाते हैं कुछ काम वाम करने के लिए, काफी टाइम बाद आते हैं, पता चलता है कि उन्होंने अपने टेन्योर का टाइम पे कुछ मिसकंडक्ट किया हुआ था, तो इंक्वायरी कमेटी बैठती है. ये सब चीजें होती है. अब हियर विटनेसेस फ्रॉम बोथ साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आपने अपने फैकल्टी ने अपने कॉलेज ने फैकल्टी ने अपने विटनेस बुलाए, बात खत्म. नहीं, एवरीबॉडी मस्ट बी हर्ड. जो मान लीजिए मैं एक्यूज्ड हूं तो मेरे को राइट होना चाहिए कि भाई आई कैन प्रेजेंट मैम, आई कैन प्रेजेंट हर, आई कैन प्रेजेंट हिम एज अ विटनेस कि भाई ये लोग मेरे साथ काम करते हैं, देखा मैंने तो कुछ किया ही नहीं कभी, और जो एलिगेशन है वो झूठी एलिगेशन है. स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में बोलूं तो बोलते हैं ना कि एलिगेशन मान लीजिए मिस हैंडल किया सिक्योरिटी स्टाफ को, तो आई शुड हैव अ राइट टू प्रेजेंट माय students who were my batchmates who were along with me at that point to testify कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. करेक्ट. witnesses are very important. hearing opportunity, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमने रिटर्न में दे दिया, खत्म. everybody has a right to be heard. Audi, alter, partem, it is a natural justice. let the other side be heard. खाली एडमिनिस्ट्रेटिव सुन के ऑर्डर पास नहीं करना है. ऐसा होगा तो मैटर जाएगा. Reasoned order reflecting judicial application of mind. ये वही चीज मैं आपसे कह रहा था. The proctor finds no merit in the submissions of the accused. This is not application of mind. It is administrative abuse of administrative discretion, I should say. आपने कुछ दिमाग लगाया ही नहीं भाई गलत क्यों है, क्या है. See, order should be written from the perspective it will be upheld in the court of law. आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो मान लीजिए स्टूडेंट को, तो आप ऐसे लिखो ऑर्डर कि आपका ऑर्डर कोई चैलेंज ना कर सके, हिले ना कहीं ऑर्डर. ऐसा ऑर्डर लिखना चाहिए. उसके लिए जरूरी है कि आप हर एक फैक्ट को फेयर बेड एनालाइज करें, एंड उसके बाद यू पास अ रीजनड ऑर्डर कंसीडरिंग एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट एक्स पर्सन इज मिसकंडक्ट बिकॉज ऑफ उसने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार दिया, तो मेरा पहला जब मैं लिखूं ऑर्डर पहले लाइन ये होनी चाहिए मेरी, एक्यूजेशन सो एंड सो was made by complainant so and so on date so and so, we received the complaint on so and so, opportunity was given to so and so, his evidence is following, the evidence of the administration is following. उसके बाद आप लाओ कि he has raised following contentions, उसके बाद आप contention से डील करो. अगर आप ऐसा ऑर्डर लिखोगे तो the chances of your order being set aside in the high court is very very less. हाई कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगा. नेचुरल जस्टिस जहां दिख गया वहां नहीं होगा. आपने अच्छा ऑर्डर ये लिख दोगे कि VC finds no merit in the contention of the appellant, the order of proctor is upheld. ये क्या ऑर्डर होता है? ये लिख देते हैं कितनी बार कि the student is not interested in coming to inquiry. आपने उसे नोटिस भेजे 3-4 जो एज पर स्टैट्यूट रिक्वायर्ड है. वो सब चीजें बहुत जरूरी है.
Don't leave your inquiries, your orders susceptible in law. I always recommend कि जो मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग के ऑर्डर में चैलेंज कर रहा हूँ कोर्ट में, तो आई सी व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर इन द ऑर्डर्स. कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, सिंगल वन लाइन ऑर्डर है वीसी साहब का या रजिस्ट्रार साहब का या फिर एओ साहब का, गवर्निंग बॉडी 2 लाइन में ऑर्डर पास कर रही है. तो कई बार सिक्योरिटी है वो जो है अनलॉफुली जो है फोर्स एक्सरसाइज करती है. डाल दीजिए जीबी में मिसकंडक्ट करूंगा. एक बच्चा जो है शरारत कर रहा था उसको थाने वाले पकड़ के ले गए, ठीक है, हम चले गए उसको कान पकड़वा रखे, ठीक है, और कैमरा चला हुआ है और पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है ठीक है चलने दो कैमरे को, और वो गाइड करते हैं कि आपको जो है ना रूल ऐसे फॉलो करने चाहिए. तो वहां सिक्योरिटी तो गलत है अगर देखा जाए तो. बिल्कुल ऐसा. आप मिसकंडक्ट का केस फाइल कीजिए और पुलिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालिए उस फोटो के साथ. उसको बुला लेंगे, उस हवलदार है जो भी है वो, इसको जो पुलिसिंग कर रहा है ना वहां पे कान पकड़वा के, मुझे पनिशमेंट दिखा दो आईपीसी में कान पकड़ने की या सीआरपीसी में, कहाँ लिखा है कान पकड़वाना है सजा है. काला पानी थोड़ी है कोई. ये तो टोटली एब्सर्ड. पुलिस के लिए कुछ जजेस ने कहा था, आई विल नॉट रिपीट द वर्ड्स, बट कड़े शब्दों में निंदा की गई है पुलिस की काफी स्टेजेस पे कि दैट अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एंड द वे दे एक्सरसाइज इट, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. अब मान लीजिए मैं कोई कंप्लेंट लेके जाता हूँ, ठीक है, पुलिस एफआईआर कर लेगी एक दिन में. आप डायरी नंबर ले आ जाइए, वही बड़ी बात है. आप डायरी नंबर ले आइए, बड़ी बात है. मैं कह रहा हूँ थाने डायरी नंबर नहीं दे रहे वो लोग. So you have to go to magistrate under Article 130 under Section 156(3) CRPC Code of Criminal Procedure. मैजिस्ट्रेट फिर एफआईआर ऑर्डर करता है. मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करनी नहीं चाहिए एफआईआर. आप लोग खुद एफआईआर रजिस्टर करो, करते ही नहीं है. आप भागते रह जाओ, कुछ नहीं होगा. और किसी इनोसेंट आदमी को फंसाना है तो फिर यू नो द वेज, आप उसकी नौकरी और सब छुड़वा दोगे. तो those are the problems with the system. But ठीक है यार, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छाई भी है. सर इसके पीछे व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट रजिस्टर्ड एज एफआईआर? सॉरी सर, तो वो क्या रीजन है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करता? पुलिस वाले सर, ये दिल्ली पुलिस से या वाला पॉलिटिकल प्रेशर काम कर रहे हैं. मैं तो यही बोलूंगा कि एक समय ऑन रिकॉर्ड तो इतना ही बोलूंगा कि एक्सट्रेनियस रीजंस होते हैं. एक्सट्रेनियस रीजंस होते हैं, एक्स्ट्रा रीजंस. काम बढ़ेगा मैं भी नहीं. मैं अभी कैमरा पे इतना ही कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा रीजंस होते हैं बहुत इस चीज के. एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 इयर्स लगभग. कि प्रैक्टिस में ये होता है कि हर एक थाने वाले को इवन सब डिवीजन को अपनी रिपोर्ट देनी होती है ऊपर, और जितनी एफआईआर की संख्या जाएगी उसका ग्राफ जो है वो डाउन होता चला जाएगा. करेक्ट सर, इसलिए वो अपनी रजिस्टर्ड करेक्ट सर. अब ये चीज मैं नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं मांग रहे, वो इसलिए रजिस्टर्ड नहीं क्राइम करते. शो करना चाहते हैं. रिकॉर्ड मैनिपुलेशन. इसका एरिया साउथ है सर. जबकि हम ये सोचते हैं कि शायद ये कुछ चाह रहा है इसलिए रजिस्टर्ड छीना, जबकि खो गया. अंतर है. लॉस रिपोर्ट लॉस रिपोर्ट करवा, लॉस रिपोर्ट कर देंगे. लॉस छीना क्या लाइन से आप कितनी बातें लिखो लिखो, इसमें 2 लाइनें और लिखो, कहाँ पे थे आप उससे सब लिखवाते हैं. कुछ हो जाए. अब कमिंग टू दिस पॉइंट कि क्या ध्यान रखना चाहिए इससे. अब जैसे मान लीजिए आप लोग के पास आते हैं, रूपल साहब आप लोग के स्टैंडिंग काउंसिल हैं यूनिवर्सिटी के, तो रूपल साहब से आपको वो आए कि भाई ये मैटर फाइल कर दिया साहब जी ने, परेशान कर रहा है, देखो क्या करना है. मेरा नाम सहर्ष है, इसमें अपने आपको बताना मार रहा हूँ इसमें कि देखो क्या करना है. तो आप लोग को इंस्ट्रक्शंस भेजनी होती है उसमें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से भेजें. जितना आप लेट करेंगे, आई विल आर्ग्यू इन द कोर्ट, सी द मैलाफाइड. हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो, बट आई विल आर्ग्यू इन द कोर्ट. आई एम सफरिंग, माय क्लाइंट इज सफरिंग फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, यूनिवर्सिटी इज नॉट रिप्लाइंग. University might have administrative difficulties, genuine administrative difficulties, but the court of law is not concerned with those things. You have to answer within a reasonable time. Instructions के लिए आपको 5-5 महीने वेट नहीं करना चाहिए भेजने के लिए. Education matters, time is of essence. Admission करना है किसी का. अब मान लो आपने किसी का सर्टिफिकेट रोक दिया, ठीक है, उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, उसका एडमिशन हो गया है पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड में, उसको जाना है, कैसे जाएगा? So time is of essence. Education, service matters में time may not be of that much essence, but in education matters, time is of essence. आप लेट हो गए, matters infructuous हो जाते हैं. Admission matters infructuous हो जाते हैं. Examination matters infructuous. University बोलेगी भाई जो second semester के एग्जाम थे वो third semester start हो गया, हम कहाँ से कराएं?
लेट हिम अप्लाई इन नेक्स्ट ईयर, उसका नुकसान हो गया। और मान लीजिए फाइनल ईयर का स्टूडेंट तो एक साल बढ़ गया, स्पैन पीरियड में आ गया उसका डिग्री, रेगुलर 3 साल में मिलेगी नहीं उसको, फिर स्पैन पीरियड लिखोगे आप लोग, आपकी भी ड्यूटी है। तो एजुकेशन मैटर्स में टाइम इज ऑफ एसेंस, कोर्ट भी चीज का ध्यान रखता है, तभी इंटरिम ऑर्डर्स पास हो जाते हैं एजुकेशन मैटर्स। वैसे ना पता है इंटरिम रिलीफ ऑफन क्रिएट्स इक्विटीज इन फेवर ऑफ अ स्टूडेंट। कोर्ट ने अगर ग्रांट कर दिया उन्हें एग्जाम लिखने का राइट, what is the probability that they will stop you from result, they will allow that university may withhold the result? Very less probable. Competitive exam तो है नहीं कोई कि रोक देंगे, अगर कर दिया तो कोर्ट लास्ट में बोलेगा अरे यार बच्चा है, ठीक है कर दो, डोंट डिस्ट्रॉय द करियर। एंड कोर्ट गलत भी नहीं है, आप लोग भी बैठोगे उस पोजीशन पे कभी हाई कोर्ट की जज की कुर्सी पे, सो दैट यू विल आल्सो पास द सेम ऑर्डर्स कि यार 21 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस से रुक गया था, एग्जाम लिखा है पास हो गया है तो लेट हिम गो। डार्ट कोर्ट में बोल दोगे he is advised not to repeat such instances, he should obey the regulations and rules properly। हाँ अब ये चीज मतलब पीएचडी लेवल पे आ जाती है तो आप सिंपैथेटिक कम हो जाएगी आपकी। नाउ ही इज गोइंग टू गेट अ जॉब आफ्टर पीएचडी, सो पीएचडी में अगर ही इज नॉट डूइंग इट एप्रोप्रिएटली तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं उतना इन्वोक करोगे, बोलोगे यू डू इट एट योर ओन तरीके से। ये यूजी और पीजी में बहुत ज्यादा होता है इक्विटी का, बहुत ज्यादा, क्योंकि दैट कैन एक्चुअली मेक एंड डिस्ट्रॉय द करियर्स। एज लिमिट खत्म हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में जाने की, आपको बाहर जाने इंडिया से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सर्विस मैटर्स में ऑल्टरनेट रेमेडी, जो भी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी सलील जी से डिस्कस कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन भेजना बहुत जरूरी है। आप बिना रिप्रेजेंटेशन भेजे आएंगे तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी हाई कोर्ट आपका मैटर नहीं एंटरटेन करे, क्योंकि यू हैड एन ऑल्टरनेट रेमेडी बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ने जैसे मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में एग्रीव्ड है, आपको रजिस्ट्रार साहब को लिखना चाहिए, आपको वीसी साहब को लिखना चाहिए, आपको अपने सेंटर, आपको सेंटर तो है नहीं डीयू में, आपके जो वो है फैकल्टीज उनके डीन से आपको बात करनी चाहिए, उनके हेड से आपकी बात करनी चाहिए, आप कॉलेज या प्रिंसिपल से बात कीजिए, जीबी से बात कीजिए। कभी ये भी हो सकता है मान लीजिए कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा चीज हुआ जो मैं अवेयर नहीं था कि भी ऐसा हो सकता है, सपोज कि मेरा एक इंक्रीमेंट ही नहीं जाता। जी सर। ठीक है, 10 या 15 साल के बाद जाके मुझे पता चलता कि नहीं तो मिलना चाहिए था, है, और मुझे उस टाइम में मिला नहीं, मुझे नहीं दिया गया। करेक्ट सर। है, और मुझे पता नहीं था तो मैं रिप्रेजेंट भी नहीं करूंगा। करेक्ट तो क्या उस टाइम में जाके मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो वो एंटरटेन होगी? आप रिक्वेस्ट कीजिए, कोर्ट में लग ट्राई कीजिए, कोर्ट में लग ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो चांस है, आप लग ट्राई कर सकते हैं कोर्ट में, और आप बोल सकते हैं कि भाई आई एम नॉट अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन फाइनेंशियल रूल्स एंड इट इज अकाउंट्स की ड्यूटी है, आई कैन नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है मेरी सैलरी फिक्स करना, ये फाइनेंस की रिस्पांसिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी है। इवन आई एम बी अ रजिस्ट्रार बट स्टिल फिक्सिंग माय ओन सैलरी इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। somebody may be even subordinate to me because registrar से ऊपर तो कौन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी नहीं है, वीसी साहब तो चलो जनरल हेड है, रजिस्ट्रार साहब से ऊपर तो कोई है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो उनकी सैलरी भी फिक्स करेगा ना, उनको तो इंक्रीमेंट देगा हर साल का, वो सब चीजें होती हैं। तो आप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई अ लक, नुकसान कुछ भी नहीं है, इंक्रीमेंट आपको मिलेगा तो कितना फायदा होगा, 15 साल सोच लीजिए। नहीं मतलब नॉट फॉर द इंक्रीमेंट, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल कोट। हाँ जनरली, हाँ जनरल, आई वाज नॉट अवेयर एट दैट टाइम, लेटर ऑन आई केम टू नो कि भाई इस तरह की चीजें थी और उसमें मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। करेक्ट कर सकते हो, अब चांसेस कोर्ट की यही है, थोड़े ऊपर नीचे होंगे ऑफ कोर्स बिकॉज़ और डिले बहुत है, बट इट इज अ फाइटेबल थिंग। ये अभी रिसेंटली सीपीएफ टू जीपीएफ वाले केसेस जो हाई कोर्ट में हुए हैं, ये भी एग्जांपल है कि वो लोग टाइमली अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए, तो बाद में फ्यूचर में मैं आपको अंदर का बताता हूं, अंदर का क्या है। अरे से मान लीजिए इतने सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया, किसी ने कभी कोई ऑर्डर पास किया एक्सटेंड कर दी डेट, किसी ने कभी ऑर्डर पास किया डेट एक्सटेंड कर दी, इसीलिए आज के डेट में अभी 5-6 साल में लोगों ने एक्सरसाइज किए हैं ओपीएस में जाने के, जो रिटायर होने वाले हैं बिल्कुल उन्होंने भी ओपीएस में जाने का। एनपीएस पे कोई बेनिफिट तो है नहीं, सीपीएफ में भी कम बेनिफिट है, जीपीएस इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्कीम ऑफ ऑल। तो जिसको जीपीएफ में जाने का मौका मिल रहा है ही विल ऑफ कोर्स ऑप्ट फॉर इट। सर्विस मैटर, refixation of अगर आप I have a question, sir. It's just a query. Actually, suppose for the employees who are below AR level, the university has already laid down a procedure that their career progression is going to take place, say after 5 years or 6 years of their rendering their service,
they will be promoted in their next grade. Okay, I mean, or they will have a direct promotion in their next grade. They will be upgraded to their next level. Say, for example, head assistant will go to section officer level. Okay, after say 5 years. And if the posts are not available and his, I mean, promotion gets delayed, what is the scene in that case? अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो डीपीसी हो नहीं सकती, एंड डीपीसी हो नहीं सकती तो उस केस में लॉ प्रोवाइड्स फॉर एमएसीपी, जिसमें आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है. सो डीपीसी कैन ओनली हैपन जब पोस्ट है. पोस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका एमएसीपी होगा. ओके ओके, थैंक यू. अब सर्विस मैटर्स में जब आप कोई रिक्वेस्ट ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको डाउट है, ऑलवेज टेक एन अंडरटेकिंग. ठीक है, ऑलवेज टेक एन अंडरटेकिंग कि भाई यूनिवर्सिटी हम ग्रांट कर रहे हैं आपको, लेकिन इस केस में ये मुद्दा है एंड कंडीशनली ग्रांट कर रहे हैं अगर इट इज सब्जेक्ट टू रिकवरी. इस तरीके अब तो क्या पे फिक्सेशन में वो लेटर इशू करने लगे हैं आप लोग. हाँ, लेकिन अभी आई हैव बेसिकली वर्कड ऑन अ केस जहां मैंने कोर्ट को सबमिट किया है कि अंडरटेकिंग्स आर नॉट बाइंडिंग. लेट अस सी हाउ जजमेंट कम्स आउट. तो अगर वो जजमेंट आता है, इंटरेस्टिंग जजमेंट होगा. तो आई हैव बेसिकली ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड वेरी ओल्ड जजमेंट्स ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट. तो अगर वो कोर्ट अपहोल्ड कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट, तो आप लोगों के सर्विस, सबके सर्विस जूरिस्प्रूडेंस पे असर दिखेगा उसका. लेट्स सी क्या होता है, टाइम में जजमेंट आने में रिजल्ट है. अब सर्विस मैटर्स में कितनी बार क्या होता है कि बहुत डाउट हो जाता है कि यार एमएसीपी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसकी अपॉइंटमेंट ये थी, कंफर्मेशन ये था, ये नहीं होना चाहिए. तो टेक बेस्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ इज टू सीक लीगल ओपिनियन. इजीएस्ट वे आप देखेंगे अक्सर जीबी बोल देती है, रेजोल्यूशन पास कर देती है कि गेट अ लीगल ओपिनियन. एंड वो यूनिवर्सिटी के वकील को कितनी बार मिलता है, कितनी बार कॉलेज अपने वकील, और कॉलेज भी उस हद तक ऑटोनॉमी रखते हैं अपनी कि दे कैन अपॉइंट देयर ओन काउंसिल्स. तो कॉलेज भी दे देते हैं कि यू मेक अ लीगल ओपिनियन. जैसे मैंने पर्सनल एक कॉलेज के लिए लीगल ओपिनियन बनाई थी, तो उनका मुद्दा ये था कि इस पर्सन को रेगुलराइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और रेगुलराइजेशन इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट ही बनेगी लीगल ओपिनियन अनलेस एंड अनटिल कुछ रूल्स अलाउ नहीं करते. आप अपनी मर्जी से रेगुलराइज नहीं कर सकते किसी. अगर सैंक्शन पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, हाउ कैन यू रेगुलराइज? हो नहीं सकता. सैंक्शन पोस्ट इज द बेसिक थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. सर मैं अगर इजाजत हो तो सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर. बताइए सर. सर अगर लीगल एडवाइस ली जाए ऑथराइज जो हमारे पैनल पे जो है उनकी, अगर वो पॉजिटिव आए तो क्या उसको डिनाई कर सकती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी? ऑफ कोर्स लीगल ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है. अच्छा, लीगल ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है सर. आपके पास पूरी ऑटोनॉमी है. लिखा है मैंने, सर्विस मैटर्स यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस बॉडी. ईसी के पास सारी पावर है. आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है डीओपीटी एंड ऑल. EC can pass resolutions, but of course EC will also see the DOPT orders क्योंकि financial implication is involved और पैसा तो DOE से ही आना है. UGC DOE से ही मांग के आपको देगी. EC will automatically see to it. कभी भी आप मान लीजिए किसी मुद्दे पे आते हैं, आपको उसका मैटर आता है, हम लोग के पास एक्सेस होता नहीं EC रेजोल्यूशंस का क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते. अब कितनी बार आप लोगों को पता होता है इंटरनली कि ये रेजोल्यूशन पास हो रखा है लास्ट वीक, उसको यूज कीजिए. कितनी बार नहीं मिल पाते, हम देखते हैं ना, ढूंढ रहे थे रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता वो वाला. तो उसी रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, कितनी बार नहीं मिलते हमें रेजोल्यूशंस, ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलते. लेकिन आपके पास हमेशा होंगे क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन है और आपको याद भी होता है कि ये हुआ था 2-3 साल पहले. जितना आपका एक्सपीरियंस उतना आपको याद रहेगा, तो उसको आप यूज कीजिए. कितनी बार ईसी रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली पिटिशनर के अगेंस्ट होते हैं, तो आप उन सबको यूज कर सकते हैं. ईसी रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन डीलिंग विद सर्विस एंड एजुकेशन मैटर्स. आप में से किसी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने, बट किसी को भी कोई डाउट हो या जनरल क्वेश्चंस हो तो सर अपना नंबर शेयर कर देना सर. आपके नंबर की बहुत जरूरत पड़ेगी सर. सर आपको ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो गए. बट स्टिल मैं एक पॉइंट पे आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने ये
केशवानंद भारती वाले केस का जिक्र किया था ना, जिसमें आप बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को जो है ना लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद 3-4 और फेमस जजमेंट आए थे, आपको तो सब याद होगा, बट फिर भी वाला आया था, हेनरी गोलकनाथ वाला भी आया हुआ था, एडीएम जवाहर वाला भी आया हुआ था, और बेसिक स्ट्रक्चर को आपके जजमेंट में उन्होंने बोला कि हम डिलीट मार दिया। All the online speaker are requested to kindly mute their speaker. आपकी यूनिवर्सिटी करने में देखिए, we have sorry to interrupt, and we have the time constraint. Sir's number is already visible on the screen. If you have any query, you can contact him as per his convenience. Our next resource person has already arrived. So now we are going to end this session, and we are very thankful to Sir Saxena ji for his valuable advices and such an interactive session. Thanks a lot, sir. हमारे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन है, हमारे शायद आप जानते भी होंगे, वेंकटेशन सर हैं, जॉइंट फाइनेंस ऑफिसर एंड लुकिंग आफ्टर द पेंशन सर। हाँ जी सर सर, 9 आपने स्टूडेंट्स दिए थे मेरे को, हाँ कॉलेज को और स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ। सुबह भेज दिए सर मैंने। And now we will take a 10-minute break. ये अभी चल रहा है काम कि छोड़ दिया उसको? अभी मतलब कुछ गए भी हैं कि डिब्बे ऐसे ही वो पैकेट कर दिया सर, पूरी लाइन उधर लगी हुई थी ना चारों तरफ से टूट गया था, तो ऊपर पैकेट बहुत
आपका। Online participants, are you on? Online participants? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार यस करने के बाद दोबारा मत करिए, क्योंकि मुझे अभी भी 5-6 लोग ही नजर आ रहे Yes, हैं। ma'am. आप कर चुके थे यस? No, ma'am. This is first. Yes, madam. Yes, हाँ, ma'am. या गुड गुड Yes, गुड। yes. सारे यस नहीं आ रहे ना, आवाज समझ में आ जाती किसकी क्या है। Yes, ma'am. We are here. Yes. मैम सबको पेंशन चाहिए। तो आज हमारे को पेंशन पे जो रिसोर्स पर्सन है मिस्टर वेंकटेशन है, और हमारे भीष्म पितामह है पेंशन के मामले में। नहीं, ये अपने आप ही द मोस्ट हम्बल पर्सन इन आवर यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जॉइंट रजिस्ट्रार्स, जो सुपर एनुएशन के बाद भी अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इनकी जगह लेने का स्टेट भी नहीं कर पा रहा है कि हाँ पेंशन के बारे में मुझे पता है, मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो इनका अभी तक ये क्या कहते हैं, जिस राजा को कोई भी चैलेंज ना किया हो वैसे राजा हैं हमारी यूनिवर्सिटी के पेंशन के मामले में। कॉलेजेस भी जानते होंगे ये बात। और फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, I would like to tell you that he is in the finance division for the last 10-15 years. 10-15 years, हाँ, शुरू से ही वहां पे है। और पेंशन के हर मैटर पे हमको भी कोई जरूरत होती है, अपने लिए भी जरूरत होती है, तो we go to him and he's been handling, not only does he handle the case with clarity, but he handles the cases with compassion. और पेंशन के पेंशनर्स जो आते हैं वो बहुत ही थक हार करके आते हैं, और उन सबको इनके पास, मतलब मैंने आज तक किसी को, अच्छा सहर्ष भी हैं, तो सहर्ष क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है पीछे वालों के लिए लीगल मैटर्स में, सिंस ही इज स्टिल हियर। लीगल मैटर्स पे तो कोई और क्वेश्चन नहीं है आई सपोज। क्वेश्चंस तो बहुत है मैम, लेकिन अब आपने नंबर शेयर कर दिए हैं तो सहर्ष जी को डायरेक्ट ही हम तंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी सारे रिसोर्स पर्संस को। बहुत बहुत ओपनली दे हैव गिवन देयर एक्सेस टू यू पीपल, बट गुड, दे आर ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस पर्संस and I am thankful to all of them and will respond to the queries to the extent possible. अच्छा रहेगा अगर आप हमारे थ्रू इस ग्रुप में queries raise करें और मैं इनको फॉरवर्ड करके रिस्पॉन्स लूँ, तो आप लोग डायरेक्टली करें और शायद रिस्पॉन्ड ना कर पाए अपनी मसरूफियत की वजह से या कॉल ना पहचानने की वजह से, तो आप मुझे डायरेक्ट करें इसी ग्रुप में, तो आई विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। थैंक यू सो मच। सहर्ष, इफ यू वांट टू रीड। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू द इशू, बहुत कंपैशन के साथ पेंशन के केसेस हैंडल किए हैं सर। सो सर, ओवर टू यू। मीना जी, आप सर को फेलिसिटेट करेंगे। नहीं सर, मैम आपने ना उनको भेज दिया सहर्ष जी को, उनको चाय पी ओ नहीं, चाय के लिए रोका हुआ था इनको। Thank you. मैं बोलती हूँ फोन। Thank you, madam. थैंक यू सर। Good evening to you all. I think we can discuss the issues, because I don't have any kind of things, whatever the issues you are facing, and then we can take a lot of things. Just I will give some brief about the things. Before going to this, I take this opportunity to tell that the maintenance of the service book. So service book and personal file is very, very important. Very, very important. As per GFR 288, rule GFR 288 clearly specifies that the maintenance of the service book, service book. Actually, you may be aware now that copy changes हो गया. Even that service book, 2 copies service book open करना पड़ेंगे. 288 1 2 3 4 5 6, it's elaborated about that service book. And thing is, service book is very, very important. The service book is the history of the employee.
from the date of joining till the retirement, all that mobility of the employee, whatever that unka hai, that it has to be recorded in the service book. Why I am saying this? When I am looking after this pension cases, many of the things, it's at the time of retirement they are making the entries pura. So usika saath aara, and moreover the personal file and service book it is very in bad conditions. So that from time to look, every year you have to make an entry, a service verified from 1/4 so and so date year to 31st March that आप sign करना पड़ेगा. Every year has to be there. And when the increment is there, so you have to make an entry. When the person is going some deputation or whatever it is, उसी का entry करना पड़ेगा. Complete things, and it has to be recorded. This is very at most important. Service book maintenance is very important. Many of the things I am saying it, I think it is not a good condition. Somehow we are managing the things, and this is. So you just take care of even service book. It is says 2 copy open karna padenge. One you are supposed to give to the employee. Another one you have to maintain it. The employee every 1st of January has to come. He will hand over to you. You make the entry, and it has to given back to the employee. So that kind of things are there. Rules are there. Then second things, once the 25 years complete ho gaya, you send the file after complete verification to the audit. Let them verify it. Whatever the basic the things that your fixation of the pay or anything ho gaya, then after 25 years ka baad hai na retirement ka, so the audit need not go back to the 25 years. So last retirement tak 25 years ka baad, whatever the period hai uska only karna padenge. This will very much helpful to the employees retiring at the time of retirement. Otherwise, Purana, that old, that 2019 90 में कुछ fixation हो गया, गलत है. Now it has to be recovered. ऐसा कुछ cases I think you people might be come across this kind of thing. So just 25 years complete होने के बाद you make a things and send to the audit for verification के लिए. College can send through college branch to the audit. So let them verify it and make the entry. So that I think it will be easy for employees. It will helpful for us also. So that things will be normal ho gaya. So coming to the pension now. 25 years or 20 years, but 20 years complete ho gaya, you can send it. Why I am 20 years? Because some people take a voluntary retirement also. So that before 20 years complete ho gaya, you can send the file. Recently, there is an order from the government. Yes. 18 years of service. देखो. Either 5 years remaining service. ठीक है. Whatever the things are, send it, and the audit people that they won't go back to that. They have already verified. They will put a seal and everything that it is verified from this period to this period. So that remaining period they will concentrate. So coming to the pension. Pension is extended to the employees of the organization and its family member as a social security measure. And establishment officers who have administered cases relating to the retirement process with utmost care, sympathy, and imagination and expedition. It is imperative that all concerned are properly educated, trained, and motivated about their roles, so that the shortcomings can be minimized and all retirement benefits can be paid as and when they become the due. Abhi, देखो, at the time of retirement, you have to settle all the things. Now, I think most of the colleges may be aware. They are sending the file well in advance, and the date of retirement, they are getting all the benefits. So we are following university also, and most of the colleges I have seen it. Now that they are getting back the file well in advance. Sir, in the case of July month, when increment is due and the retirement is in August, then we are not able to send you the file. Because an increment, after adding the increment, you can send the file. नहीं, So, वापस चला गया. You can't. Eligibility for the pension.
government servant must have entered the service on or before 31/12/2003. One should have confirmed in any post and should have the minimum 10 years of service to become eligible. And the servant, the government servant must have retired or deemed to be retired. So that is the thing, sir. Okay, classes of pension. Superannuation pension, I think you all know that the retirement age is 60, 62, 65 in our things meant. 60 for the non-teaching, 62 for the other teaching staff, the librarian, the controller exam, registrar and DP, Director of Physical Education. So I want to tell that thing, sir. So retiring pension, 30 years of the qualifying, another rule is there. One employee completed 56 years or 30 years as per that FRSR, and the 20 years, this is coming I think you may be aware, FR56 है. FR56 आपका मालूम है ना क्या है? 30 years or 56 age. So even that some compulsory retirement उसी में fall कर रहा. Then voluntary retirement, rule 48A, 20 years of service. इसमें I want to tell you one thing. Because coffee issues this VRS के लिए आ रहा. देखो, because अभी court cases है, even I was thinking to take it to the EC also, I couldn't able to find out. Somehow something which has happened in the Purana things है, अभी चल रहा. See, rule says that a person these are the 20 years complete हो गया, or that 56 FR में है, irrespective of the scheme, whether it is a PF, GPF or CPF or NPS, one completed 20 years of service, they can submit the VRS. Now the issue is coming. There is हमारा university में it's going on. The person who is opted under the CPF scheme cannot submit the VRS 20 years में. Yes. So that was the things. Actually क्या हो गया ऐसा कुछ नहीं है. I don't know. 87 में कुछ special VRS scheme कुछ आ गया. कुछ UGC से ministry से कुछ आ गया that CPF this is not applicable for the CPF scheme. They are keep on that things अभी चल रहा. So that is galat actually. That is not correct. A person who has completed 20 years of service, he can submit the VRS irrespective of the whether it is a CPF or GPF or NPS, whatever it is, they can submit the VRS. ठीक है, so इसका clear है ना? Because इसमें काफी issue अभी कोर्ट के चल रहा इसी का. ठीक है. Then invalid pension आपका मालूम है, compensation pension, compulsory retirement pension, these all are आपका. What is invalid pension? Invalid pension है ना, the person कुछ medically unfit है. अभी these all are ना अभी nowadays it is not coming. But इसका अलावा I want to tell one thing. So invalid pension, इसका अलावा there is a S gratia pension. Yes. S gratia pension, it's a separate rule. S gratia pension rule is there, and उसमें they have classified in different category A, B, C, D, E. ठीक है, A, B, C, D, E we will come later. A, B, C, D ना the person organization में he is काम कर रहा. उसका है ना the nature of work है ना that automatically he will get affected, he'll affected. So उसी के लिए that कुछ है. So these all are coming to the D and E. D and D. Suppose he was by accident or by terrorist attack हो गया, and that he will be getting the category D and E के लिए. Main thing is इधर में you have to see it. What is the pension amount? That was the see the last notional pay. Whatever that notional pay you have to take it. That notional pay will fix as a pension throughout to their life. So I think this is you are supposed to know it. Notional Pay. As on the date of retirement or as on the current date? Correct. Suppose why I am saying the notional pay. You have to revise that pay
with the pay commissions also. So in other ways, at the time of retirement, at the time of retirement nahi hai, at the time of that the incident took place, है ना, उसी time में what was his pay? That pay will be fixed as a pension. Pay, not the things. Okay, so that family, suppose a spouse will get that amount. Say for example, he was getting 2 lakhs rupees as a pay. 2 lakhs. The pay is basic only or the basic plus? Basic only, basic. 2 lakhs pay because the DA automatically आ रहा उधर में allowances नहीं है, only basic pay. At the time of incident, उनका pay is 2 lakhs. That 2 lakhs will be as a pension. That the spouse will be getting it. For the category D. D and E. How long? D. How long? Lifetime. Till the family, the spouse is alive. ठीक है, उसका बाद family pension will come. Suppose at the incident took place, है ना? It's nothing to the age. Family member. Suppose उनका शादी नहीं हो गया, spouse नहीं है, father and mother, they will be getting 70% of that pay as a pension. Suppose अभी उसका बाद the spouse after the spouse family children also they will get 60% of that pay. So this is a pension as a fixed. Yes. Parents 70, that children 60%. See, this is only for the category D and D. ठीक है? So हमारा things में ना ये case is there. हमारा university में. Anybody from Shraddhanand College? नहीं है? ठीक है. When the teacher was taking the class and एक student है ना गोली मार दी है. So he expired. नहीं, it is maybe back in 2000 or somewhere that period में. ठीक है? So now that family is getting, that the spouse is getting this pension, Yaskresha pension. ठीक है? In the case of ABC category then? ABC category, these all are some percentage only. Percentage, and I think you can see that Yaskresha pension rule में उसी में it will be there. ठीक है? So that I want to tell you that because nobody is this is thoda this nowadays it is coming, and even some questions your exams and others also now is going to appear. So इसलिए that you अच्छा उसका पगले. Now at the time of retirement, what are all the terminal benefits? Pension, commutation of the pension, gratuity, group insurance, leave salary, TA on retirement. I think pension, commutation, these all are the terminal benefits, and these all are exempted from the income tax also. ठीक है? TA कब तक अप्लाई कर सकता है पर्सन? TA actually that rule says 1 year का करना पड़ेंगे. It can be extended also. Prior to retirement also? Retirement, after retirement only. नहीं, we say retirement only, prior to retirement नहीं है. It's a grant, retirement grant है. This is 90% ना उसमें 80% of that whatever that amount pay na pay में 80% they will be getting it. CTG composite travel grant along with that whatever that if it is a air ticket also that admissible one way. देखो इसमें 3 component है. 3 components. Is it CTG में 3 component. One is the pay, 80% of the pay they will be getting it. Yes. Then uska train ticket or air ticket from the station to that hometown. These are is that their belongings. Articles है ना, उसी का that fixed rate is there, per kilometer rate is there.
what is the distance, multiply by that kilometer. Three payments will be. Yes, yes, this, three, that submission of the bill. Bill, yeah. Submission of the bill ka saath only, that whatever. Two payments. Yes, One yes. payment we have to give. Yes, yes, 80% will automatically you are getting it. Okay. Sir, for evidence, what they will show कि हम जा ही रहे हैं actually. Hometown shift हो ही रहे हैं, ये हमें कैसे evidence मिलेगा? क्योंकि सब. See, you are supposed to verify your service book that hometown declare हो गया ना. Right, sir. लेकिन अगर सर वो जाके और दो. नहीं, that is, see, that is immaterial. They have at the time of retirement they have availed the things, but it presumes that they have gone. They might have come also, na, that some people might have settled in Delhi, and that is a one time only. उसके बाद कुछ नहीं है, बस. It's the last time. So coming to the pension, in case of government servant retiring in accordance with the provisions of this rule, before completing qualifying service of 10 years, the amount of service gratuity will be calculated at the rate of half month salary for very completed 6-month period of qualifying. So actually pension है ना, minimum 10 years होना चाहिए, ठीक है? Suppose 10 years नहीं है, say for example a person, one organization to other organization, they are getting it. So उसमें in lieu of pension there is a service gratuity and normal gratuity also that applicable. Pension in lieu of the pension, service gratuity they will be getting it. In case of government servant retiring in accordance with the provisions of the rule, after completing of the qualifying service not less than 10 years, the amount of pension shall be calculated 50% of the emoluments. Everybody knows it. Qualifying service 9 months हो, 3 months हो तो क्या करते हैं? Like 9 months. See, one has to complete 10 years of service to eligibility for the pension. The 10 years means exact 10 years. Yes, 10 years. 9 years. नहीं, उसी के लिए नहीं है. 10 years complete करना पड़ेगा. ठीक है. So that in between कुछ आ गया, then service gratuity मिल जाएगा. So that 10 years complete करना पड़ेगा. So that after 10 years of service, he will be eligible at the time of retirement. That 50% of the whatever the pay will be fixed as a pension. The minimum pension is 9,000, maximum is 1,25,000. I think that you are aware of the things. Then additional pension is there. In addition to that things, additional pension is there at the age of completion of the 80, 85, 90, 95. 20%, 30%, that 40, 50, you will be getting it. That is. Suppose someone is getting 1,25,000. Ji. Will be that enhancement will be there? नहीं, fixed है. उसका that is the maximum limit है. ठीक है. Then coming to the commutation of the pension. Commutation means the conversion of portion of the pension into lump sum amount. Government servant who surrender portion of his monthly pension receives a lump sum payment in lieu of such surrender. The person, the employee can commute up to 40%. That's the maximum. Even if you want less, you can commit. 30% also you can come. Even 10% also. The maximum limit is 40%. Commutation is not allowed when judicial departmental proceeding initiated against the government service. During inquiry चल रहा कुछ something matter is pending with the court, उसी time में commutation नहीं मिला. The formula for calculation of commuted amount is 40% of the whatever that pay into 12 into commutation factor is that the 8.172 for sub 60 ka you have to take the factor of 61. Suppose 62, you have to take the factor of 63. 65, you have to take the factor of 66. So multiply करें, that is the commuted amount. अगर बैक का कोई केस हो रहा हो तो करंट में उसकी एज क्या है उससे एक साल ज्यादा. I will नहीं बैक मतलब. अगर किसी को 2003 में. देखो I am coming to that. Suppose this whatever the things है within a year में होना चाहिए. एक person employee is retired. Within a year में that इसका होगा. Suppose more than a year हो गया, we have to submit the medical certificate. So फैक्टर क्या लेते हैं?
Fact, that is why I'm medical certificate. When medical certificate submit हो गया, उसी time में what is that year? Suppose 60 हो गया, एक साल 61 में you are going to process, then you have to take the 62 factor. So you are not supposed to take the Purana factor. That is why that they are insisting medical certificate होना चाहिए. Medical certificate, the purpose is you have to take the current factor, not the person retired है ना, उसी factor नहीं होना चाहिए. So that is the thing. The restoration of the commuted pension is not linked to the age or date of birth. It's not related to the age of birth. That it's restored after completion of the 15 years from the date of receipt of the commutation. Okay, so that it's nothing to do with the age. के बीच में वो 15 तारीख की हो विजिट तो आप नहीं, the suppose उसी का rule is there within that month or 15 days you have to take in the month itself. Full month you have to take it. उसका बात तो हो गया, then that in between है ना, you have to take that month only. F May you take the things. If the person is retired 6 May, commutation was done immediately on retirement, the restoration will be 1 to 21 May. So basically that is that, because not that age or date of retirement nahi hai. So it is date of receipt of the commutation amount. So from the from that day to 15 years होना चाहिए. क्या है? I think commutation हो गया. Now coming to the gratuity. Gratuity, I think you may be aware that pension next is the gratuity. Gratuity के लिए now I think काफी changes आ गया gratuity के लिए. Yes, काफी changes. इसका पहले we are following the CCS pension rule. उसमें whatever the 33 years is the maximum years we are taking, and उसी का साथ we have calculated. You may be aware, काफी लोग है ना, people. I think the Payment of Gratuity Act extended to the education institutions in 1997. ठीक है, 1997 में कर दिए. I'm giving the background of this Payment of Gratuity Act adopted, and we are also following the same thing. And हमारा university में काफी लोग, especially for the non-teaching staff, they have gone to the court, labor court. There are humpty number of petitions, and the court has given you have to give it as per the Payment of Gratuity Act. Then we have gone to appeal also. Then High Court also we have gone. उसमें then finally क्या है? We got a legal opinion. We are not going to succeed those cases, and the issue is gratuity amount ka triple amount we are paying the interest. Whatever the interest due, the amount due. Say for example 50, the interest is working out to 2 lakhs. So we have to make it 2 lakhs 50 ऐसा है. So we have approached the Labor Ministry through Ministry of हमारा HRD that to exempt University of Delhi under the Payment of Gratuity Act. That Labor Ministry मना कर दिए. No, we won't give it. It's beneficial. So that कर दिए. Then उसका बाद we have taken to the EC and we have implemented that thing, Payment of Gratuity. In 14 say that we are paying the things. And उसका बाद क्या है that we are calculating both Payment of Gratuity Act and as well as that CCS pension, whichever is beneficial we are giving it. Gratuity Act is beneficial होता है हर किसी. The main thing is the calculation में क्या है that we are इधर में maximum year is 33 CCS pension में, उधर में number of years service 40 years 45 years we are taking it. That is one advantage. When the calculation part is coming in 4 Sundays excluded, इसलिए 26 divided by 26 कर दिया. So it is automatically beneficial to the non-teaching staff especially. So because teaching staff already they are reaching the maximum limit. We have queried regarding that qualifying service at that time. I am coming to that. नहीं अभी इसमें as per the Payment of Gratuity Act के लिए if employee
completed 5 years of service, he is eligible for the gratuity under the Payment of Gratuity Act. Okay, so that has to be suppose 4 years, 6 months, 7 months ऐसा है. So you have to round it up to 5 years. So that is that. 6 months we have to complete it. 5 years हो गया. 5 years completed होने के बाद he is eligible for the gratuity. Suppose the employee has completed 4 years, 6 months, 7 months. That has been rounded up to 5 years, and that he is eligible for the gratuity. 5 months only then? नहीं उसमें नहीं है. उसमें नहीं है. In CCS rule it is like 3 months है और अगर 9 months है तो उसको half year. We have taken it, and but this 30 Payment of Gratuity Act is the payment of gratuities, I think advantageous to the mostly non-teaching employees है. ठीक है. Gratuities paid at the while death I think gratuities at the time of retirement are इधर में एक I want to clarify it. अभी we are going to the EC also. नहीं NPS I will come later. Either may again because I want to make it clear from most of our university staff is that there is a rule appendix A and B of the statute 28A में है. उसमें the gratuities not the employee won't get the gratuity in case of resignation, or removed from service, and dismissal. ऐसा कुछ rule is there. Now the question is coming. काफी pending cases are there. We are that dismissal or removed from service. We are not going to touch it. But resignation के लिए, since we adopted the Payment of Gratuity Act, he is eligible. ठीक है. So because काफी लोग ना that say resignation में that rule says that you're not eligible. We are taking to already we have taken अभी EC का also that. What about the past cases, sir? What about the past cases? करना पड़ेंगे. ऐसे ना 97 में कर दिए. क्योंकि sir those cases are from 2015, but the services are from that. It has to be seen on case to case basis and which condition क्या है that देखना पड़ेगा. ठीक है. Resignation का type कुछ भी हो. नहीं he left the organization, he is eligible after completion of the 5 years of service. So these are the things. 1 year suppose gratuity now. सर जो retired person है वो died है उसके behalf पे कौन-कौन और कब तक apply कर सकता है? नहीं died हो गया that the family members spouse will be that ना. Yes. This provision is available in the CCS pension rule. ठीक है. Length of qualifying service 1 year to this kind of things. It is CCS pension rule. The maximum gratuity is 20 lakh. ठीक है. इसमें एक things I will tell you. Actually, say for example 1/1/2016 में 20 lakhs आ गया. ठीक है. The Payment of Gratuity Act amended in the Parliament to 2017 में. ठीक है. So suppose people retired from in between. 16 to 17. So payment of as per the Payment of Gratuity, how much they will be getting it? Sorry, 10 lakh. I want to tell you the 10 lakhs only. उसमें that even if you calculate the things because the act has been amended in 2017. So उसी में that CCS pension rule is advantageous for them. ऐसा cases है ना when 6th CPC में implement 10 lakhs हो गया ना उसमें काफी issue है. Same thing उसका पहले 3.5 lakhs है and that implemented 1/1/2006 में 10 lakhs आ गया 1/1/2006 में. So that to 2006 में कब है? It has been to ऐसा 8-9 में that pay commission implementation आ गया. So in between वो है ना उनका Payment of Gratuity Act में they will get only 3.5 lakhs. So 10 lakhs है. So that period that one has to be remembered. What is the date? 20 lakhs? 20 lakhs 1/1/2016 से. 1/1/2016 से 20 lakhs. अभी right now 20 lakhs. अभी one more things are there as per the pay commission recommendation.
once you cross that 20 lakhs, your DA limit is enhanced to 50%. And 25% इधर में add करना पड़ेगा, ऐसा कुछ recommendation is there. But we are not supposed to do the things unless the order is issued by the ministry. So we are not supposed to take our own things. 25% increase करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, unless that order is issued by the ministry. Okay. This is the calculation part. I think you all are aware that what is the 26 and उसमें total में it's a calculation. Coming to new pension scheme. No, I don't. New pension scheme. First of all, before these all are available, you can do the things. You are also knowing it. हमारा पास new pension scheme cases are ना. Now, two things are there. One, now that as per the recent order, the payment of gratuity act has been extended to the new pension scheme also. So now we are processing the cases new pension scheme. Abhi practical things I am saying it, how we are dealing it. So gradually that we are doing it. For other things, we are simply forwarding that whatever the applications forms है to NSDL. So हमारा पास कुछ नहीं है. We don't have any role NPS के लिए. ठीक है. So for simplification, that this new pension scheme gratuity we are finalizing it. On the basis of gratuity. Yes. Only. NPS के लिए whatever that document, I think the prescribed forms are there. So that the NPS employee will submit and simply we are forwarding to NSDL. NSDL in turn, they will dispose the things, whatever the 60% things they are releasing it. Baki 40% annuity में से they are the fund manager का forward कर रहा, उधर से they are getting the monthly pension, whatever that उनका eligibility है, उसी का साथ they are getting it. So it's just we have to aware of the things. बस बाकी का all the things you all are aware of the things. So new pension scheme के retirement case होंगे, हमें सिर्फ gratuity act से ही. Yes, sir. Payment of gratuity act के लिए करना पड़ेंगे. तो वो तो हम सब college base पे ही कर सकते हैं. Yes, sir. Gratuity pension only you are sending to university. बाकी gratuity is within the disbursement within the ambit of the college. So it's not necessary to come to the university at all. तो आपका burden तो खत्म होने वाला है, इसका मतलब later or sooner. New pension में तो आपको आना ही नहीं अगर. हाँ अभी once that all the people retirement होने का बात है ना, that अब that उसका बात काफी है, नया things will come, even the some changes also will come in future में. So ऐसा है that I think अभी still that gratuity करना पड़ेगा ना, it will come है ना, then कहाँ खत्म होगा? यूनिवर्सिटी का करना पड़ेगा, कॉलेजेस लोग ने हम करी नहीं, our own employees है इधर में, कॉलेज का आपका कितना एम्प्लॉइज रिटायर कर रहा है? हाँ, देन हमारा पास इतना है. हाँ, so हाँ ऐसा नहीं है, अभी काफी एम्प्लॉइज है यूनिवर्सिटी का सर. So new pension scheme, it was introduced with effect from 1/1/2004. NPS was made mandatory for all the new recruits of the to the central government service 1st January 2004. After the enactment of PFRD Act 22/12/2003, I think you may be aware of this date also. अभी कुछ, but I think we will discuss कुछ issues है इसका साथ. NPS is now regulated under the PFRD Act 2013 and regulation framed there under the Department of Financial Services. अभी इसका पगले 10% that we are giving it. 2019 से it has been 14% the employer contribution is giving it, contributed by the employer. Then I think I explained these things. Tier 1, whatever the things उसी के लिए this. The same thing I explained, the 60/40 or 80/20. Yes, yes, 60. That's only. These are the Government of India's notifications from time to time. Okay. ठीक है, अभी आप बता दो इसका बात है ना. I want to clarify 2-3 things है.
इसमें one is 2020 में that NPS is extended to the pension and अभी this pension rule 1972 है ना replaced with the 2021 में आ गया नया things में, so it is there, you can see it. And for the NPS subscriber के लिए one is the gratuity and the pension. Suppose the NPS subscriber death हो गया, similar option has to be given and they are eligible for the pension as per the CCS pension rule 1972. That was there, that has been extended to the government of India and अभी it is not extended to the autonomous bodies. ठीक है, so maybe at काफी उसका notify हो गया, then withdrawn हो गया, that is one issue, still it is there. That is अभी it has not extended, but the government of India में NPS subscriber death हो गया and their family is entitled for the pension under the CCS pension rule 1972. It is there, not only pension, gratuity also उसमें they are eligible. Of course, हमारा का that the payment of gratuity act implement हो गया, then we are giving it. And pension अभी तक नहीं आ गया, we are waiting for this. This is one issue. Second 1920 में March, I think June 2020 में government of India OM is there. That OM says those who are appointed, that selection हो गया prior to 1/1/2004 and whatever the reasons they joined after 1/1/2004, their case may be dealt as per they say they are supposed to consider under the pension scheme. ठीक है, नहीं है, इसलिए I am saying it. So that आ गया, even ministry has also forwarded, UGC is also forwarded, and we have implemented also. Yes, we have implemented also. I'm talking about the 2020 में 2020 OM. That OM says those who are selected prior to 1/1/2004 and joined this university and हमारा 3-4 cases we have done it. That I think Brijesh Chaudhary and Tirupati and कुछ cases है teaching में, 4 cases we have done. And that नया another OM आ गया. I think you may be aware that कुछ defense personnel, the paramilitary personnel filed Delhi High Court and उसका बाद they have given the judgment. The government is amended that. उसका बाद and 20 March 23 में another OM issued. That OM says not that selection है. The advertisement हो गया 22/12/2003. If the advertisement is prior to 2023, They can also. they are eligible to consider the old pension scheme. ठीक है. So this 23 letter is extension of that letter. Right. 21 में आ गया ना, 21 it is not नया है, पुराना OM का is extension of that OM only. And But recently we have received the letter that autonomous bodies पे apply नहीं हो रहा. नहीं, I am coming to that only. I am coming to that, and because that is why I am saying again and again that this OM is extension of that OM. It is not a naya OM. उसके that OM says those who are appointed, the selection हो गया prior to 1/1/2004 and joined the organization. Whatever the reasons that हो गया 2004 that they are entitled. उसका extension, not the selection, not only selection है, but the advertisement होना चाहिए. That OM the extension that has been implemented in the government of India. अभी government of India में implemented हो गया. But in our cases है, पगले आ गया, UGC ministry से इधर आ गया. And that we don't know whatever the reason, then we that you as per the UGC notification they have withdrawn it. Withdrawn it, not applicable. But still we are going to write it. Moreover, that OM Pagle says it is an extension of OM. We already implemented. But what happened to that? How we can that अभी है ना that they are saying it. But moreover, the Department of Expenditure letter clearly says
it is not, whatever that order issued, it is not automatically applicable to the autonomous body. Not automatically applicable to the autonomous body. And that says, we are also, what is that meaning? Not automatically. So we have our own bodies. So you have to take it, this and that, and usme karna padenge. That was one issue. Second, abhi they said, however, it is under the consideration, I said that they have given it. Since nobody is taking up the matter, isliye abhi it is there. So we are going to write it, and I am in the process में हूँ. देखो आगे ही नहीं, इसी के लिए ना people are confusing us. हाँ नहीं एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए. एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट में नोटिफाई होना चाहिए. नोटिफाइड एडवर्टाइज मतलब क्या है? नहीं काफी लोग इसलिए that we are administration में we are getting the pressure from these people. So yes. So I think this is a by and large thing. You can ask the question now. Ignore me. कैसे करना पड़ेंगे? सर हेलो. Yes sir. पूछो जी. हेलो. नहीं I think इधर में कुछ है anything. नहीं वो उसका हेलो. Is there any question from the सर मेरी क्वेरी है. यस सर. सर एक हमारे पास प्रोफेसर आए हैं NIOS से, सर्विंग फॉर 15.5 years. ओके. उनका हमें कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मंगवानी है वहां से NIOS से. ओके. तो सर उसका फॉर्मूले में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, फॉर्मूला क्या लगेगा उसमें? सर अभी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मतलब प्रो रेटा पेंशन होना चाहिए ना पुराना ऑर्गेनाइजेशन से. जी सर. यू आर आस्किंग दैट ओनली. यस सर. So I think from 1/1/2006 say 50% of the last pay, you have to take it that into consideration. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes, 50% of the last pay done multiplied by that 12 and that factor that was a pro rata pension. Sir, but NIOS submitted the calculation like 50% of the last basic into commutation factor into 12 into the 31.5 years divided by 40. नहीं that is a galat hai, because we are also similarly doing so many cases from people who have joined in JNU, and we have gone to the level of the things that clearly they have said from 1/1/2006 say that pro rata concept khatam ho gaya. There is no pro rata at all. And that whatever the last pay that you have to take it and उसमें देना पड़ेंगे. Only gratuity के लिए we have to take the 33 years pro rata gratuity. बाकी का I think you have to take the 50% of the last pay as a pension. Okay sir. Thank you. ठीक है. Okay. Sir, I have a question. Sir, एक employee एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं after serving 22 years of service और अब उनकी सर्विस के 5 year है इस समय. तो आपने जैसे भी कहा कि उनके सर्विस रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी वेरिएशन प्रोजेक्ट यूज करवा दी, तो उसकी सर्विस कोई जाके एंट्रीज होनी चाहिए जो हम भेज सके यूनिवर्सिटी सर्विसेज. अच्छा, यू मीन टू से अभी एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज ऑब्जर्व हो गया. हां फ्रेशली अप्लाई किया. ठीक है हमने अभी यू जस्ट टेल मी कौन सी कॉलेज है. व्हाई आई एम आस्किंग इट ना. फंडेड कौन सी फंडेड कॉलेज है? ट्रस्ट टू 5% देगी गवर्नमेंट 5% ट्रस्ट. उसका मतलब 95% दे आर गेटिंग यूजीसी ग्रांट. ठीक है, उसी के लिए देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रो रेटा पेंशन एंड ग्रेजुटी है, उसका नहीं है. सो इफ अ पर्सन इज गोइंग ऑन डेपुटेशन और व्हाटएवर इट इज उनके लिए करना पड़ेंगे. पर्सन वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज एंड द सेम 90 फंडेड कॉलेज है, उनका देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रो रेटा पेंशन ग्रेजुटी. ठीक है.
Leave also that there is a provision that you can transfer the leave. South Campus City, since both are same furniture, same, there is no need to send. That is why I am saying it. That is why I am saying it. Now you take their service book, इधर transfer करो. उधर में क्या है, then उसी basis में करना पड़ेगा. सर जब यूनिवर्सिटी में सर्विस बुक आएगा उसमें क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए जिससे वेरीफाई पहाड़ नहीं पूरा होना चाहिए. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रिटायरमेंट से क्या है. यस 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 एवरीथिंग ये सब कभी हाँ पूरा होना चाहिए. हाँ whatever the things है that you can prepare that sheet है and उसी basis में that you can. मैं अपना पर्सनल केस डिस्कस करना चाहूंगी. मैं यहाँ से पहले जामिया में थी. मैंने अभी तक मैं एनपीएस में ही वहाँ थी 2007 से और अभी भी एनपीएस में ही हूँ. तो मुझे वहाँ से मैंने अभी तक प्रोराटा बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं लिए ये सोच के कि एनपीएस में कोई बेनिफिट नहीं है. अभी ग्रेजुएट आ गया you can ask it. अब ग्रेजुएट प्लस पेंशन दोनों अमाउंट में मंगा लूं. नहीं पेंशन कहाँ. सर प्रोराटा पेंशन उनको नहीं देना होगा. अभी एनपीएस है ना उधर also you are एनपीएस है and only ग्रेजुएट मिलेंगे. यस यस. सर एक्शन में कोई नया रूल आया है कि अब हम हर जगह से 300 ले सकते हैं. हाँ सर एक क्वेश्चन उसका ओएम चाहिए मुझे वहाँ अप्लाई करने के लिए मेरी yes yes that I think you can see that leave rule also in combined with the leave rule you can take it. It is there. Any other? हेलो जी सर मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए सर कोई एम्प्लॉय 2 साल या 3 साल कंप्लीट करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वन ऑटोनोमस बॉडी टू अनदर ऑटोनोमस बॉडी, तो ये 2-3 साल के लिए हमको क्या प्रोराटा ग्रेच्युटी देना पड़ेगा? नहीं एक्चुअली ना सर अभी आपका सपोज वन इंस्टीट्यूशन में I told you ना the gratuity is the eligibility for gratuity is 5 years होना चाहिए. Okay. So less than 5 years. नहीं अभी that employee is covered under the NPS or CCS pension rule. Sir, we are all covered under NPS, sir. अच्छा NPS. Then I think they are eligible for only 5 years for getting the gratuity. This is one issue. Second, you can ask that because since he is not quitting the service. Yes, sir. No, sir. Actually, he is moving to another organization. Yes, sir. So then उनका service count करना पड़ेंगे. Then we have to pay prorata gratuity, na? 1 year. If it is whatever they limited to that gratuity, so that उनका service will be counted. Exactly. So if it is say for example if he has served here for 2 years. But another issue is there that yes, organization will say since he is not completed to इसका service, so you have to argue, you have to take up the matter that कैसे करना पड़ेंगे. You understood ना? Sir, so, but employee will tell me that if I will you have to convince. No, I am not resigning or thing. I am submitted the technical resignation. I am joining another organization. Yes, sir. ऐसा convince करना पड़ेगा. Okay, no, but what they are telling that if I will served for more than 5 institutes for 20 years, then I will not get any gratuity. That is why I am saying it. So all the service has to be counted. That all the service has to be covered. So that at the time of retirement, that he will be getting the. Then if all the services will be counted, then every institution will give the gratuity. Yes. Then those employees who have served here for 2 years and they are left by giving technical agency to another organization, then we will give. Yes, sir. That is why I am saying it. How he has submitted technical resignation. You have to study that technical resignation क्या meaning है. He is joining other organization by submitting that service has to be counted. Yes, so sir. उसके लिए that for counting service that the payment of gratuity करना पड़ेगा. You have to इसलिए we have to convince. You have to take up the matter. You have to convince it. मतलब we have to give prorata gratuity for 2 years. Yes. Okay. We are calculating. We have some organizations also. We are getting it. Okay, sir. Thank you. अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन से कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि
अगर उनको कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है college to college. That we have to see it. Because then either the provision is there to transfer that leave. उस टाइम हो जाएगा. I came from government of India. I joined इधर and I got whatever that मेरा leave encashment उधर मैं got it. इधर मैं whatever that leave accrued that also I got it. Yes, yes, I have taken pro rata gratuity, pro rata pension, everything आ गया. Yeah. क्या ये मस्ट कंडीशन है कि आपको तभी प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, once इधर आने का बात only that service will be counted. Your पुराना सर्विस बेनिफिट है ना, इधर में ट्रांसफर करना पड़ेंगे. पे प्रोटेक्शन के लिए कंपल्सरी काउंटिंग भी करवाया मैं नहीं पे करवाया प्रोटेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, that is your last पे LPC is there है ना, so उसी बेसिस में that हो जाएगा. that पे प्रोटेक्शन का there is no need. This is your service has to be counted उसी के लिए. ठीक है, very nice. हाँ, yes, yes. हाँ. किसका? हाँ, ठीक है, ठीक है. Sir, I have a query. जो ये ग्रेचुटी का आपने बताया ना, तो सर जनवरी 23 में ग्रेचुटी का एक सर्कुलर जो आया था, जो एक्सटेंड किया गया जी, तो उसमें एक क्वेरी रेज की गई थी कि जो डिपार्टमेंट से कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं दोनों में डिफरेंस है ग्रेचुटी कैलकुलेशन में. तो हमारा ये कहना था कि जो ये ग्रेचुटी के एप्लीकेबिलिटी की बात हुई है, क्योंकि 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया था एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ग्रेचुटी, उसको यूजीसी ने होल्ड पर रखा था टिल द क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री. सर 2000 एक मिनट अगेन कैन यू रिपीट. 2016 में अगस्त 2016 में एक ओएम निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट ग्रेचुटी बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू द एनपीएस सब्सक्राइबर्स. सर दैट इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Yes. And then thereafter, UGC sent a circular to all the autonomous. Yes, I am aware that because the match pass chal raha with the UGC ministry and the Department of Expenditure. They are collecting so many details from so many universities. Even we have adopted 2014 May. We are giving that gratuity under the payment of gratuity. We have given the detailed reply. And उसी का साथ वाले अभी आ गया. My query is कि जब ये चीजें हुई clarification ली यूजीसी ने, that was regarding the applicability of gratuity which was clarified by the ministry in January 2023. So the calculation should be as per CCS pension rules. नहीं सर, नहीं that is the thing. Sir, how see when they said that you have to adopt the payment of gratuity act and the calculation should be the payment of gratuity act, not from the CCS pension rule. But sir, the language says that gratuity is compulsory. They are not saying that you have to adopt payment of gratuity. They say that under the payment of gratuity act. That's what is that, sir? What does mean? What does mean? See, you have to pay the gratuity under the payment of gratuity act, na? Hello? Under the payment of gratuity act की बात नहीं, उन्होंने कहा कि एक्ट ये कहता है कि ग्रेचुटी सबको देनी है. उन्होंने ये नहीं कहा कि इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ऑफ एम्प्लॉय आपको ग्रेचुटी देनी है. ये एक्ट कहता है. नहीं सर, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कीजिए. नहीं सर, actually when they said that the gratuity has to be paid under the payment of gratuity act, मतलब क्या है that the calculation also from the payment of gratuity act, not from that CCS pension rule है. Okay sir, okay. And the second query is एक 12 फरवरी 2020 का एक OM आया था, वो भी BOPPW ने निकाला था और उसमें ये कहा गया था कि if a subscriber changes his job after technical verification through proper channel, अगर वो जाता है और उसको अगर ग्रेचुटी की बेनिफिट अवेलेबल थी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में और सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो ग्रेचुटी की बेनिफिट चल रही है, सपोज ओपीएस या कोई भी, then he or she will be entitled for the gratuity.
वो उसमें सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, इवन ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस भी था। it is already has, sir. It is already has that from तो the government. 2020 का ओएम अगर देखेंगे तब तो वो आपका सीसीएस पेंशन रूल के तहत कवर होगा, जो उसमें कवर हो रहे हैं एम्प्लॉई। Sir, that is for central government and state government and vice versa है। उसी के लिए थर्ड कैटेगरी इवन फ्रॉम ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस। हाँ ठीक है, even for the autonomous also that whatever that see अभी latest आ गया and that is whatever that OM issued पुराना 20 में, that is for the CCS pension rule only, not for that payment of gratuity act है। अभी की जो 2020 के ओएम में कवर हुए हैं उनको सीसीएस पेंशन रूल के तहत ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी। Yes, sir. उसी का that whatever that but that organization sir, almost all the organization there is different class of the people who are appointed prior to 2004. Those people covered whatever rule you are saying, and those who are appointed after 2004 they are covered under the NPS, and they are supposed to follow as per the Payment of Gratuity Act. And these people cannot give that things है ना, ठीक है सर। सर लेकिन 2020 के ओएम में एनपीएस के लिए ही निकाला था और 2023 का भी ओएम एनपीएस के बाद नहीं है। Sir, again I am telling you what you are saying है ना, that has been adopted in the central government. That OM is not applicable for us, for the education institution like university. What you are saying, sir, what you are saying is absolutely right है। 20 में OM आ गया ना, even that OM says that people the NPS subscriber death हो गया, they are entitled for the pension also, सही है ना that? उधर में दोनों में वो 12 फरवरी वाला नहीं था, ये दूसरा है ना। That is why, sir, what you are saying that OM that is applicable for the NPS in the government of India में, not for the other. No sir. Then sir, okay, sir, you, when it is applicable, and then what is the need of they are issuing that Payment of Gratuity Act? वो था सिर्फ जिन्होंने सर्विस चेंज करी थी उस पे एप्लीकेबल हो रहा था, जबकि अभी का जो ओएम आया हुआ है वो के लिए जो 11/2004 Sir, that OM I am aware of the things, उसमें है that I am completely agree with you. Even for the NPS है उसके लिए that it has been there. But they said that was not made applicable to university. That is why I am saying it. I am talking about the university. I am not taking पूरा autonomous body नहीं है. I am talking about the university. University के लिए that recent OM आ गया. And they are asked to take the Payment of Gratuity Act है. ठीक है सर? मेरी क्वेरी है सर, हमारे यहाँ एक टीचर है जो एसोसिएट प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर बन के जम्मू यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां पर उन्होंने मतलब वहां पे उनका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ से उन्होंने लिया एक्स्ट्रा ऑनरी लीव भी लिया, तो वहां पे वो 3 साल रहे, 3 साल के बाद वो वापस आ गए, तो उनका जो ग्रेच्युटी का जो है वो हमने उनको इंस्टीट्यूट को लिखा इसको जम्मू को, तो उन्होंने कहा कि सिंस ही हैज नॉट वर्कड अप टू 5 इयर्स तो हम ग्रेच्युटी नहीं देंगे। उनका एनपीएस में है ये नहीं, वो अभी अब ही इज इन एनपीएस है, वो तो 14%। तो फिर इनको खुद से अपना एनिवर्सरी का यस आस्क हिम टू पे उनका है, he has gone on UOL है ना, UOL he can pay। तो सर ये क्या कहते हैं इसका, ये पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट वाला है, यही वाला में फॉर्मूला लगाना यस इसी से हम कैलकुलेट करेंगे उसकी ग्रेच्युटी, इसी का अभी है ना नया OM is there, the percentage is they are mentioned, not this thing sir। 4% NPS में 4% gratuity के लिए है, so you have to calculate that formula, not for this Payment of Gratuity Act। Payment of Gratuity Act, this Payment of Gratuity Act है ना 4% किसका सर? See, actually ना Payment of Gratuity whatever the things आप देना पड़ेंगे, उसी के लिए कैलकुलेशन है। अभी the people moving mobility में आ रहा उनका 4% करना पड़ेंगे। उसका बेसिक पे एक्चुअली ना 14% है ना इधर में। प्रोफेसर नहीं क्यों नहीं let the mask it। So
एक क्वेश्चन लास्ट ले लेंगे। 4% बेसिक पे कौन सा आएगा, प्रोफेसर वाले ने वहाँ लेना था वो लास्ट पे। हाँ यस यस, उसी में कैलकुलेट करना। इवन यू कैन सेंड टू अस, वी विल कैलकुलेट, वी विल सेंड इट। अच्छा आप ठीक है सर। रविंदर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरे को पेंशन से रिकवरी के बारे में प्रोविजन जानना है कि क्या क्या रिकवरी हो सकती है पेंशन से। पेंशन से यू आर नॉट सपोज टू रिकवर एनीथिंग है। Sir, and that see we have to tell that under what circumstances the pension has to be recovered. Okay. Excess payment हो गया उसी के लिए? नहीं सर, जैसे accommodation वगैरह के लिए कोई that whatever the government use, you can recover from the relief in pension. From dearness relief. Yes, relief in pension में recover हो सकता है। Okay sir, thank you. ठीक है मैं आ रहा हूँ। So relief in pension में that I think you can recover it. सर एनपीएस का पर्सन कोई आउट ऑफ इंडिया सर्व करने गया है ईओएल पे, तो उससे क्या क्या उसका उनका खुद ही पे करना पड़ेगा ईओएल में। नहीं क्या देना है उनसे, देना है वो एनपीएस में द सेम है, परसेंटेज है ना 4%। यू टेल मी व्हाट इज उनका कंट्रीब्यूशन, उसका सीपीएफ दैट सॉरी एनपीएस कंट्रीब्यूशन क्या है वो? बाहर में उन्होंने अपने आप ही खुद ही भेजा अपना। एनपीएस में चल रहा उनका कंट्रीब्यूशन द 14%। इट्स गोइंग, यू आर नॉट गिविंग द 14%, दोनों में उनका जाना पड़ेगा। मतलब he is paying the both government first step and government। कैसे उसी पीरियड में क्या है? तो उस पीरियड का कोई पैसा नहीं आया नहीं कैसे दैट कंटिन्यूटी होना चाहिए। दैट she want to ask if someone went on the UL देखो एनपीएस में